pledge. The pledge is also a bailment, but for a specific purpose, that is as a security for loan. Pledge भी bailment है, लेकिन pledge में जो goods दे रहे हैं वो केवल एक ही पर्पस है, एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन, गिरवी रखना. असलम साहब ने केस का नाम याद दिला दिया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. वेरी ग्रेट. So section 172 says the bailment of goods as a security for payment of a debt or performance of a promise. The parties in this case, the bailer is called owner and bailee is called pony. यहाँ तक कोई डाउट पूछो. अभी कादिर साहब का जवाब नहीं आया. चलिए आगे बढ़ते हैं. Duties same as that of bailee. Pony की ड्यूटी कैसी है? सेम that of bailee, और owner की सेम as that of bailer. Duties of pony: take care of the goods bailed, not to no unauthorized use of the goods, not to mix the goods with their own goods, return the goods, return accretion to the goods, not to set up adverse title. Duties of owner: pay the loan, disclose all the faults, indemnify pony, pay extraordinary. Because why extraordinary? Because this is sorry, this is non-gratuitous bailment. Pay deficit if the pony sales goes due to default by the owner. Rights of pony. Pony के right आ गए भाई. Retain the pledge goods. Pony may retain the goods pledge for payment of debt plus interest plus all necessary expenses for preservation of the goods. Retention for subsequent debt. Pony may retain the goods pledge for payment of subsequent debt only when it is provided in the contract, but that should be in the contract. Recover extraordinary, definitely, because it is a non-gratuitous bailment. These 3 points are clear. Purnav is asking something. अच्छा, अब्दुल जी का जवाब आ गया. Understood. Okay बच्चे. एक अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टर प्रणव ने पूछा है. सर, इफ ए पर्सन finds a ring in a shop and hand it over to the shopkeeper to hand over to the owner, if come, but after some days owner does not come and finder asks shopkeeper to give the ring back, what to do? क्या क्वेश्चन पूछा कि सर एक दुकान पे एक रिंग पड़ी हुई मिली और उन्होंने मिस्टर सपोज प्रणव को एक रिंग पड़ी हुई मिली और प्रणव जी ने वो रिंग शॉपकीपर को दे दी. भैया जो ओनर आया तो उसे दे देना. ओनर आया नहीं, रिंग किसके पास रही? शॉपकीपर के पास. तो क्या प्रणव उससे वापस ले सकते हैं शॉपकीपर से? द आंसर इज यस, डेफिनेटली. प्रणव को जो चीज मिली थी, प्रणव के पास जो केवल उससे ट्रू ओनर ही क्लेम कर सकता है, बाकी कोई और क्लेम नहीं कर सकता है. ट्रू ओनर के पास ही राइट है. जब तक पूरा क्लेम नहीं करता तब तक उस चीज के ऊपर उस फाइंडर का राइट. क्लियर? यहां तक कोई डाउट 3 पॉइंट में नहीं है किसी को भी? राइट ऑन डिफॉल्ट बाय ओनर. ओनर ने डिफॉल्ट किया, पेमेंट ही नहीं किया लोन का. इन दैट केस द ओनर हैज नॉट मेड द रीपेमेंट ऑफ लोन. If the owner makes default in payment of the debt within the specified time, the pony may bring a suit against the owner upon the debt and retain the goods as a collateral security, or sell the things pledged on giving the owner reasonable notice on of the sale. Right? होल्ड करना है सिक्योरिटी के रूप में या उसे नोटिस देके बेच सकता है. If the proceeds of such sale are less than the amount due, the owner is still liable to pay the balance.
greater than the amount so due the pony shall pay over the surplus to the owner. Simple सा फंडा है. लोन 1 लाख रुपए का था, सिक्योरिटी बिकी 90,000 की, तो 10,000 रुपए पोनी क्लेम करेगा पोनर से. लोन 1 लाख रुपए का था, सिक्योरिटी बिकी 1,20,000 की, तो 20,000 पोनी वापस करेगा पोनर. The value of loan was 1 lakh rupees and the sale value of the security was 90,000. In that case, pony can claim 10,000 from the owner. If in case the loan is rupees 1 lakh and the security sale value is rupees 1,20,000, then 20,000 has to be repaid to the owner by pony. Clear? Sorry. Manoj is asking, sir, in case of finder of lost goods includes currency note found. I think in this case, currency owner should be find out. अगर नोट पैसे ही पड़े हुए मिल जाते हैं, हालांकि पैसे में लिखा नहीं होता किसके हैं वो, लेकिन फिर भी ओनर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. And some rights are same that of bailor, terminate the bailment, demand return of the goods anytime, claim acquisition right against third party. To redeem the goods before sale, section 177. This is important point. And at this point, there may be a question in your exam. When owner makes default in making the payment of debt or performance of promise, he still has a right to redeem the goods pledge at any subsequent time before the pony sells them. But he has to pay such additional expenses to the pony that arose due to his default. So, first of all, we should understand what is the meaning of redemption. Redemption means to recover back the goods by making of the payment of debt or performance. मतलब तो liability से पे करके goods को वापस लेना. तो अब again we come to the point number 177. When owner makes default in making the payment of debt or performance of promise, he still has a right to redeem the goods pledged at any time subsequent time before the pony sells them. But he has to pay such additional expenses to the pony that arose due to default. मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक ओनर ने पेमेंट नहीं किया लोन का, तो पोनी को राइट है उस गुड्स को बेचने का, पर गुड्स को बेचने से पहले ही ओनर उसको वापस ले सकता है लोन का पेमेंट करके, लेकिन जो खर्चे एडिशनल हुए वो सारे इसको ओनर को पे करने पड़े. एक बार अगर उसने पोनी ने गुड्स को बेच दिया तब वो रिकवर नहीं कर सकता. क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेक्शन 177 बताओ बच्चों, तभी आगे बढ़ूंगा मैं. सेक्शन 177 क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? आगे बढ़ते हैं. I think this will be the last topic for the day. Pledge by non-owner. We are discussing that only the owner has the right to pledge the goods. भाई जो मालिक होगा वही गिरवी दे सकता है. But there are some cases where a non-owner, means the person who is not the owner, even that he can pledge the goods. So first is pledged by mercantile agent, business agent. A mercantile agent who is in possession of the goods or document of title with the consent of owner can pledge them while acting in the ordinary course of business as a mercantile agent. Simple कहता है ओनर की कंसेंट के साथ वो गुड्स को प्लेज कर सकता है एजेंट. Such pledge shall be valid as if were made with the authority of the owner of goods. Clear? Provided Pony acted in good faith and has had no notice that owner has no authority to pledge. क्या मतलब कि जो पोनी है उसने गुड फेथ में काम किया हो और उसे जरा भी आइडिया नहीं हो, वो यही मानता हो कि जो हमारा एजेंट है उसको राइट है गुड्स प्लेज करने. क्लियर इतनी बात? प्लेज बाय पर्सन
in possession under voidable contract, section 178 capital A. When the owner has obtained possession of the goods under a voidable contract, the pledge created by him will be valid provided the contract has not been resided before the contract of pledge, and the pony has acted in good faith without the notice of owner's defective title of. क्या मतलब हुआ बच्चे इसका कि ए ने बी को गुड्स बेचा, जो बी को बेचा और ए के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइडेबल था. जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करता, बी ने उसे प्लेज कर दिया, इट इज वैलिड, राइट. एंड वन मोर थिंग, the B has the person who is the pony has no idea the goods, the transaction between A and B is void. Clear? Pledge were where owner has only a limited interest. This is important. Again, I think practical question has been asked on this point in your exam. किसी टाइम में पूछा गया है, मुझे ऐसा लग याद है. Where a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest. Example number A, example, A pledge his jewelry worth ₹1 lakh with B for a advance of 70,000. यानी कि advance जो था, loan amount was of 70,000 and the value of jewelry is 1 lakh. Now P pledged the same for 90,000 with B. No. The pledge is valid only for 70,000 because B has the right on this jewelry only up to ₹70,000. A ने ज्वेलरी 1 लाख रुपए की 70,000 रुपए के लोन के लिए गिरवी रख दी बी के पास, और बी ने उसे आगे गिरवी रख दी 90,000 रुपए. नो, केवल और केवल बी 70,000 के लिए ही गिरवी रख सकता है, क्योंकि बी का राइट उस ज्वेलरी में 70,000 रुपए का ही था. यहाँ को क्वेरी, कोई डाउट बच्चों इसमें? फिर मैं स्टार्ट करेंगे सुपर ओवर, and after super over we will have the revision of what we have discussed today, and I will discuss the way of presentation. एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा मैं. जब तक आप क्वेश्चन कुछ क्वेरी हो तो पूछिए, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों. I am waiting for your queries. आलोक सिंह सर क्लियर है, कोई क्वेरी नहीं है. Pranav saying no query sir. Okay. Anyone else? Miss Shravani saying clear sir. Okay. Abhishek clear sir. चलिए स्टार्ट करते हैं. सुपर ओवर 1, सुपर ओवर 3. The finder of goods has right succession, purchase, lien, none. ओके, असलम साहब की क्वेरी आई. असलम साहब, अभी मैं सुपर ओवर के बाद दूंगा, मैं स्टार्ट कर चुका. आप लोगों की क्वेरी ठीक है ना? अभी लेते हैं, पहले ये सुपर ओवर कर लेते हैं. द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज राइट ऑफ सक्सेशन, परचेज, लियन, नन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A finder of goods is subject to the same responsibility as that of bailey, bailor, surety, purchaser. Next point. The bailment of goods as security for payment of debt is called pledge, bailment, mortgage, none of these. The bailment of goods as security for performance of a promise is called pledge, bailment, mortgage, none of these.
What is the essential element of valid pledge? Delivery of goods, delivery of bills, price, none of these. The pledge is a contract of bailment, agency, guarantee, mortgage. एक query आई है sir, second last slide. It means you are asking about bailment pledge by mercantile agent. So this slide says कि mercantile agent is authorized by the owner can pledge the goods, right? Mr. Abdul Qadir was asking, sir, if in case A has taken a loan of 1,20,000 and the security is rupees 1 lakh value, so whether he can be further pledge for 120 or 1 lakh? कहना क्वेश्चन ये है इनका कि साहब ए ने लोन लिया 1,20,000 का और सिक्योरिटी की ज्वेलरी केवल 1 लाख रुपए की। अब बी ने उसको आगे अगर प्लेज कर रहा है तो 1,20 के लिए कर सकता है या 1 लाख के लिए होगा? देखिए नॉर्मली जो सिक्योरिटी होती है वो लोन के अमाउंट से इक्वल या उससे ज्यादा होती है। अगर ऐसा केस है भी तो भी वो 1 लाख के लिए ही प्लेज करेगा, 1,20 के लिए नहीं करेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब जरा आंसर चेक कर लें। Finder of lost good has the right of lien. Responsibility as that of bailey. Sorry. The bailment of goods as security for payment of debt is called pledge. The bailment of goods as security for performance of promise is called again pledge. What is the essential element? Delivery of goods. The pledge is a contract of bailment. So these were the answers. Who is the first one? Again, Muhammad Aslam Saab is the first one who is given all the correct answers. Second one is Mr. Pranav Vasisht. Congratulations, both of you. Third one is Mr. Abdul Qadir. Fourth one is Jyoti Jha. Congratulations, बच्चों. सुजल नेगी. अरे सभी के आंसर सही दिख रहे हैं मुझे तो यहाँ पर. All of you have given all the correct answers. सुजल नेगी and Mr. Manoj Kumar Thakur, Mr. Piyush, Miss Mogili Palli, Swati, Mr. Sunil Kumar, Shri Lakshmi, सभी के आंसर सही हैं. All of you have given all the correct answers. Mr. Alok, Prachi, Parsarthi. Okay, congratulations all of you. Sapna, Mr. Ingle. Okay, congratulations all of you. तो भैया ये तो हो गया. अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से 5 मिनट के अंदर. क्या हमने पढ़ा? 2 घंटे 2.5 घंटे में हमने क्या दिमाग मारा? Let's start. Bailment. Bailment means delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed according to direction of the person delivering them. Parties, bailer who delivers, bailee who receives. Essential, there should be agreement, there should be delivery of goods, that for some purpose and after the accomplishment of purpose and period, the goods should be returned. Kinds of bailment on the basis of benefit, for the benefit of exclusively bailer, bailee, or for benefit of both.
for the benefit of both is called non-gratuitous bailment. Gratuitous without consideration, non-gratuitous with consideration. And in gratuitous bailment, bailer is liable for known faults only, and all expenses will be borne by bailer. In case of non-gratuitous bailment, there is with consideration, bailer is liable for all the faults, known or not known. Extraordinary expenses borne by only the extraordinary expenses will be borne by the bailer. Duties: disclose known faults, indemnify bailee, bear expenses, receive back goods. Rights of bailer: terminate bailment, demand return of the goods anytime, claim accretion. Right against third party. Duties of bailee: to take care the goods bailed, no unauthorized use of goods, not to mix the goods with own goods, return the goods, return accretion to the goods, not to set up adverse title. Right of bailee: right to compensation, claim charges, action for wrongful deprivation of goods, deliver goods of any of the joint bailers. Right of lien. Lien, remember, retain the goods belonging to another until the claim is satisfied or some debt due to him is repaid. General lien: right to retain goods in respect of any debt. Particular lien: right to retain any goods in respect of concerned debt only. Termination of bailment. On expiry of the stipulated period, accomplishment of a specified purpose, bailee does anything inconsistent with the conditions, gratuitous bailment anytime, by death, destination subject matter. Finder of the lost good, duties same as that of bailee, rights, lien, sue for reward and sale of goods. Remember, pledge, bailment of the goods as security for payment of debt or performance of promise. Parties: bailer is called pawner, a bailee is called pony. Duties of pony same as that of bailee: take care of the goods bailed, no unauthorized use of goods, not to set up, not to mix the goods with the own goods, return the goods, return accretion to the goods, not to set up adverse title. Duties of owner: pay debt, disclose all the faults, indemnify bailee, pay extraordinary expenses, pay deficit if pony sells the good due to default by the owner. Right of pony: retain the pledge goods, retention of for the subsequent debts, recover extraordinary expenses, right on default by owner. Right of owner: terminate bailment, demand return of the goods anytime, claim accretion, right against third party to redeem the goods before sale. Now, pledge by non-owners: there are cases of pledge by mercantile agent, pledge by person in case of voidable contract, and pledge by owner who has only limited interest. Good evening, my future chartered accountants. Good evening, Alok, Lakshmi, Mitesh Bhai, Chatan, Sapna, Jyoti, Mr. Ingle, Mr. Sankaran, Manoj Kumar Thakur, Sushil, Abhishek, Khushi. Good evening, everyone. Hopefully, all of you have revised the chapter bailment and pledge. सबने रिवाइज किया है ना बच्चों? कोई ऐसा था जो बहुत जरूरी काम था रिवाइज नहीं कर पाया? कोई ना कोई तो होगा. Good evening, Harshesh, Sujal. So let's revive. Then we will have the test, a self-assessment test on the topic bailment and pledge. Ready? So what is the bailment? We have discussed the bailment means delivery of goods by one person to another for some purpose upon a specific contract that shall, when the purpose is accomplished, be written or otherwise disposed according to the direction of the person delivering them. बेलमेंट क्या है? कोई चीज देना किसी को किसी पर्पस के लिए और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि पर्पस पूरा होने के बाद वो चीज वापस कर दी जाएगी. Parties, bailor who delivers, bailee who receives. What are the essentials of bailment? The 4 points: agreement, delivery of goods, possession for some purpose, and return after the accomplishment of purpose. Kinds of bailment on the basis of benefit, for the benefit of bailor, for the benefit of bailee, and for the benefit of both.
on the basis of consideration. It is gratuitous when it is without consideration, and it is non-gratuitous when it is for consideration. Remember, gratuitous without consideration, bailer is liable for known faults only, and all expenses should be borne by the bailer. In case of non-gratuitous bailment, it is with consideration, bailer is liable for all the faults, whether known to him or not. And in this case, only extraordinary expenses will be borne by the bailer. Right? Duties of bailer: to disclose the known faults, indemnify bailee, bear expenses, receive back goods. And what are the rights of bailer? Terminate the bailment even before the term, premature. Demand return of goods anytime, claim accession right against third parties. So this right is common for both bailer and bailee. Remember, duties of bailee: to take care the goods billed, not to authorize, not to do any unauthorized use, not to mix the good with his own goods, return the goods after the purpose or after the expiry of time, return the accretion to the goods, not to set up an adverse title. Right of bailee: right to compensation. Bailee can claim compensation, claim charges, and action for the wrongful deprivation of goods, deliver goods at any time to any one joint bailers. And right of lien is applicable, is available to the bailee. What is the meaning of lien? Lien: to retain the goods belonging to another for some payment until his claim is satisfied or debt is due to be repaid. There are two types of lien: general lien and particular lien. General lien: right to retain any goods in respect of debt, any debt. And particular lien for specific debt, concerned debt. Clear? Termination of bailment: किन किन वे में टर्मिनेट हो सकता है? On the expiry of period. If bailment is for specific purpose, then after the accomplishment of purpose. Bailee does anything inconsistent with the condition of the agreement of bailment. Gratuitous bailment: anytime, even before the time or without before the purpose. By the death of bailer or bailee, destruction of any subject matter. Finder of lost good: duties same that of bailee. Rights: lien, sue for reward if there is reward is there, and sale of goods if the owner is not ready to accept them or not found even after the reasonable search. Pledge: pledge is the specific bailment, yani bailment for a specific purpose. The bailment of goods as security for payment of debt or for a performance of promise. Parties: in this case, bailer is called pawner and bailee is called pony. Duties same that of pony, and duties of pony is same that of bailee. And duties of pawner is same that of bailer. Same, take care the goods bailed, not to unauthorized use of goods, not to mix the goods with his own goods, return the goods, return the accretion, not to set up adverse titles. Same as that of bailee. Duties of owner: pay debt, disclose all faults, indemnify bailee, pay extraordinary expenses, pay deficit if pony sells good due to default by the owner. Remember, rights of pony: rights retain the goods pledged, retention for subsequent debt, even recover extraordinary expenses, right on default by the owner. ठीक है? और क्या रह गया? अभी कर रहा हूँ, ले रहा हूँ बच्चों आपकी क्वेरी, जो एक दो क्वेरी हैं. Rights of owner: terminate bailment, demand return of goods anytime, claim accretion, right against the third party. Remember, to redeem the goods before sale. ये क्या मैटर था कि अगर मान लीजिए जो ओनर है वो लोन नहीं चुका पाता है, ओनर इज नॉट एबल टू पे द लोन, एंड pony is going to sell the security, but before the sale, owner can pay the loan and get the security back. Pledge by non-owner, pledge by agent, pledge by
person under voidable contract and pledged by owner who has only a limited interest. तो ये रिवीजन था, इसमें क्वेरी है आप लोगों की, बट उससे पहले प्रणव गुड इवनिंग बेटा, तेजस गुड इवनिंग, समीर गुड इवनिंग. ओके, मितेश भाई saying sir it is called consignor and consignee. No, consignor consignee are the agent. Consignor relationship of consignor consignee is agent and principal. Mr. English saying sir is it your last session for the batch? I think so. गुड इवनिंग प्रियंका, सुनील कुमार, गुड इवनिंग बच्चों. तो यहां तक कोई डाउट किसी को बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट. प्लीज प्रिपेयर दिस शीट. You need not to send the answers. प्रणव कह रहे हैं सर रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट डेब्ट बता दो एक बार. रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट डेब्ट इज जस्ट लाइक जनरल लियन. रिमेंबर जनरल लियन कि बैंक वाले किसी और लोन में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अदरवाइज डिसाइडेड है तो नहीं कर पाए. गुड इवनिंग निकिता. प्रिपेयर दिस शीट. चलिए स्टार्ट करते हैं. हु इज टुडेज गेस्ट, टुडेज एक्सपर्ट कौन है भाई, देख लो. मिस्टर छोटा भीम सेइंग हेलो टू एवरीवन. तो फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू. Bailment is defined under section space of Indian Contract Act 1872, 144, 146, 148, 149. I think this is the easiest question for you. The answer is section 148. Next question. In all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances. The statement is true, false, partly correct, none of the above. This statement is true. Next. If the goods are lent free to the bailee for his use, it is known as accommodation, gratuitous bailment, non-gratuitous bailment, deposition. Bachon, this is self-assessment test. You need not to send the answers. The answer is B. It is gratuitous. Fourth, if bailee mixes the goods of the bailer with his own goods without the consent of bailer, the bailee is liable to pay the expenses for separation of goods and damages. The bailee is not liable for compensation, none of these. The answer is
The bailee is liable to pay the expenses for separation of goods and damages. Non-gratuitous bailment. It is a contract of bailment where no consideration passes between the bailer and the bailee. It is a contract of bailment where some consideration passes between the bailer and the bailee. A contract of bailment which is executed only for the benefit of bailer, none of these. The answer is, it is a contract of bailment where some consideration passes between bailer and the bailee. Lien means a charge, a particular status, a guarantee, a legal claim to hold property as security. The answer is D, a legal claim to hold property as security. The bailer in pledge is known as bailee, owner, pony, none of these. The answer is, it is owner. Next, if the true owner refuses to pay to the finder of goods the reward declared by the true owner for finding the goods, the finder of the goods has the right to sue the true owner, excise particular lien, both A and B, none of these. The answer is both A and B. He can file the suit or he can also excise the particular lien. If the bailment is space and space, the bailer may compel the bailee to return the goods before the expiry of period of bailment, but the bailer shall indemnify the bailee for loss incurred by the bailee. You have 4 options. You have to select best option. The answer is A. If the bailment is gratuitous and for a specific period. Okay. Next, in fact, last, if the pawner makes default in payment of the debt within a specified time, the pony may sell the things pledged on giving the pawner space of the sale. A notice of 10 days, notice of 20 days, notice of 30 days, reasonable notice. What was written in the law? The answer is reasonable notice. So this was the self-assessment test. Who are the lucky one? Get 10 on 10.
Harshit sir, I got 10 on 10. Okay, congratulations. Abdul got 10 on 10. Very good. और कौन किसने 10 आए? निकिता के, सुनील, अभिषेक, सपना, Nilesh is asking, sir, is this for November 2023 new batch? I think this is for मई बैच. ये हमारा जो बैच चल रहा है वो मई अटेम्प्ट के लिए है. ठीक है. सो अच्छा ये बताओ, हमारा जो हमने 2 चैप्टर पढ़े, यूनिट 1 यूनिट 2, लर्न हो गए ना अच्छे से वो? उन चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब एग्जाम में आएगा तो यू कैन सॉल्व ना. मेरे ख्याल से आपने रिवाइज तो कर लिया होगा 2 बार. फिर अपन थर्ड चैप्टर, लास्ट चैप्टर कॉन्टेक्ट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो यूनिट 3 इज द लास्ट चैप्टर फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर योर कोर्स सी इंटरमीडिएट. द टॉपिक इज एजेंसी एंड सबको अच्छे से रिटेन हो गया. वेरी गुड. तो सेक्शन 182 टू सेक्शन 238 एजेंसी. ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं इसको. मेघांश भारद्वाज सर, मेघांश जी आपकी प्रॉब्लम मैं ब्रेक के बाद लूंगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं ब्रेक का डिस्कस कर लूंगा. ओके. अभिषेक, मैंने जो प्रेजेंटेशन का तरीका बताया था बेटे, वो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आज टाइम मिला तो डेफिनेटली एक बार फिर मैं आज ले लूंगा. ठीक है. ऐसे मैंने नोट्स आप लोगों को भेज ही दिए हैं ये. तो स्टार्ट करते हैं एजेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट? देखिए, पहले तो इस कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले. हम आलसी हैं, हम किसी और से काम करा रहे हैं. We are lazy, we are not able to do the work, so we have taken the help of someone else, and that person is working on our behalf. So that person is called agent and I am called principal, right? And जो भी मैंने ऐसा काम किया दिया है वो काम करता है, उसके लिए सारी लाइबिलिटी मेरी है. I am the liable, I am the responsible for all the acts done by that person who is called agent on my behalf as per the instruction given by me. अगर वो पर्सन सारे इंस्ट्रक्शंस मेरे फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग कोई काम करता है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. उससे ज्यादा करता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. सिंपल सा फंडा है पूरे चैप्टर का. राइट. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, एजेंट. सेक्शन 182. अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड. थर्ड पर्सन में डील करने के लिए मैंने किसी को रिप्रेजेंट किया या मैंने किसी को रिप्रेजेंट किया तो मैं बन जाऊंगा एजेंट. और मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ही इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटा. राइट. सॉरी, प्रिंसिपल. एंड द प्रिंसिपल, सेक्शन 182, द पर्सन हु इज फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. तो रिलेशन इज क्लियर. हु इज द एजेंट, हु इज द प्रिंसिपल, क्लियर. Now question arises, section 183 says, who can appoint the agent? So section 183 says, any person who is age of majority and of sound mind. It means the person
who is called principal should be competent to act as to enter into the contract. जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है, जिसे हम प्रिंसिपल कह रहे हैं, वो कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। क्लियर? बट हु कैन बी द एजेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट। एनी पर्सन, even minor, please underline, even minor and person of unsound mind may be the agent, but they are not responsible to principal. See the example number 1. I think this concept will be clear to you. Example 1, A appoints B, a minor, to sell his old bike at a minimum price of 30,000, but B sold the bike for 20,000 only. Now A cannot recover the loss of 10,000 from B because B is the minor और minor की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। क्या है एग्जाम्पल 1? कि मिस्टर ए जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बी जो एक माइनर है उसे अपना एजेंट बना दिया और उससे कहा भाई साहब मेरी बाइक बेच दो, पर बाइक का मिनिमम प्राइस 30,000 रुपये होना चाहिए। उस माइनर ने, उस बालक ने बाइक बेच दी 20,000 रुपये, लॉस हो गया 10,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, थर्ड पार्टी तो 20,000 के लायबल है। अब जो 10,000 का लॉस हुआ, ए बी से क्लेम नहीं कर सकता। लॉ सेज agent can be minor or person of unsound mind, but they are not responsible. Clear यहाँ तक? And consideration, important thing, consideration is not necessary to create agency. ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज दी कहता है must be consideration. Consideration definition थी कि without consideration contract is void. No. In this case consideration is not. Section 25 remember, इसमें लिखा हुआ था कि कौन से केसेस हैं जहां पर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? एजेंसी। तो दे कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट कैन बी डिसाइडेड विदाउट द कंसिडरेशन। क्लियर यहां तक? इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चों? बिकॉज दिस इज द बेसिक स्लाइड। आगे बढ़ते हैं फिर। Abdul is asking, sir, if a third party has given guarantee for minor's agency, can the seller claim the loss? The seller can claim the loss from the ship, right? क्योंकि वो केस अब आप गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो। Now modes of creation of agency. So I have prepared a chart. There are 4 modes: express agreement, implied agreement, operation of law means compulsory by law, and agency by ratification. Ratification means compulsory acknowledgement. So implied agreement is again of 2 types: agency by estoppel or by holding out. You remember the partnership act, partnership by estoppel or holding out concept लगभग same है. Agency by necessity. So we will discuss in detail one by one. Okay, यहाँ तक बच्चों सबके आगे कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। First is by express agreement, section 186 and 187. The authority of an agent may be express or may be implied. An authority is said to be expressed when it is given by words or spoken or written. And written document is called a power of attorney. Written document होता है हम क्या बोलते हैं normally? Power of attorney. A appoints B by a written agreement, that is called power attorney, as his agent to sell his factory. Now the relationship between A and B is an agency by an express agreement. If you remember the movie of Bajigar, some of you have watched the movie. The complete movie, whole movie is based on the concept of power attorney. पूरी पिक्चर में स्टार्ट हुई पावर attorney से और खत्म हुई पावर attorney से। तो क्लियर ये बात? The agreement of agency may be written or oral, or may be express or may be implied. So we have discussed the express
ठीक है। बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इम्प्लाइड मीन्स रिटन वर्ड्स नहीं है, स्पोकन नहीं है, बट बाय कंडक्ट. An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case. Section 187. Once you read section example number 3, X of Agra regularly sells goods out to Y of Fatehabad. Z of the Fatehabad coming to Agra collect the money from Y and pays to X. Now there is an implied agency between X and Z. Please read this example once again. Okay. X जो आगरा में रहते हैं तो रेगुलर गुड्स बेचते हैं, वाई जो फतेहाबाद में रहते हैं, एक मिस्टर जेड है फतेहाबाद से आगरा आ रहे थे, वाई से पैसा लेके आए और एक्स को दे दिया, तो वो इम्प्लाइडली क्या किया उन्होंने, एज ए एजेंट काम किया. क्लियर इतनी बात? नाउ लेट डिस्कस डिफरेंट मोड्स ऑफ एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट. इम्प्लाइड में सब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या था, बाय एस्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट. सेक्शन 237. First, we read the example, then come to the provisions. Example number 4. A tells T within the living of P that he, A is P's agent. A P को बोल रहा है P के आसपास होते हुए, यानी कि P को समझ में आ रहा है कि A कुछ कह रहा है. A T से कह रहा है कि वो P का एजेंट है और ये बात P को समझ में आ रही है. A tells T within the living of P that A is P's agent and P does not object the statement of A. Later on, T supplies certain goods to A who pretends to be acting as an agent of P. Now P is liable to pay the price to T. क्या हुआ, A ने T को बोला कि वो P का एजेंट है और ये बात P को सुनाई पड़ रही थी, यानी कि P आसपास था, P को मालूम पड़ रहा था कि A ऐसा T को बोल रहा है और P ने इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया. तो टी को भी यकीन हो गया कि ए जो है पी का एजेंट है. बाद में टी ने कुछ गुड्स बेच दिया ए को, अब पी लायबल हो जाएगा उसको पे करने के लिए, क्योंकि जो रिलेशनशिप आया पी एंड ए के बीच में, ये क्या बोलेंगे हम, एजेंसी बाय एस्टॉपल. द रिलेशनशिप इन दिस एग्जांपल बिटवीन पी एंड ए इज कॉल्ड एजेंसी बाय एस्टॉपल और एजेंसी बाय होल्डिंग. क्लियर? सो नाउ कम टू द प्रोविजंस. Where the principal by his conduct or statement willfully induces another person to believe that a certain person is the agent, he is subsequently prevented or stopped from denying the fact of it. कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल ने अपने कंडक्ट से किसी को ये एहसास करा दिया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उसका एजेंट है, तो बाद में प्रिंसिपल उसे डिनाई नहीं कर सकता. प्लीज रीड वंस अगेन द प्रोविजंस. I take the query. Z is also agent of Y. Yes, it is the implied agency between Z and Y. No, Z is not the, confused हो रहे हैं मिस्टर इंग्ले. Z is the agent of X, not of Y. ठीक है, क्लियर? ये सेक्शन 237 क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं. वन मोर एग्जांपल. P allows his servant habitually to purchase goods for him on credit from T. P allows his servant habitually to purchase goods for him on credit from T and pays for them. On one occasion, he pays his servant cash to purchase the goods. The servant misappropriates the money and purchase goods on credit from T. Now T can recover the price from P as he had held out the servant as his agent on prior occasion. What is the case? Case is saying Mr. Principal allowing his servant, let's say A, to purchase the goods from Mr. T on credit, and Mr. P made the payment for that goods. But one day, Mr. P
gave the cash to his servant and asked to purchase on cash, but servant misappropriated the cash and purchased on credit. Now P is liable to make the payment to the third party. So question one should be arising in your mind that sir, money P have to pay. भैया तुम जाओ सामान खरीद लाओ, उधार खरीद. एक दिन नौकर को उसने कैश दिया, भैया आज तुम नगद खरीद के लाइयो, लेकिन नौकर ने बदमाशी करी, पैसा जेब में रखा और वो माल उधार खरीद लाया. क्या पी लायबिल होगा? लॉ से यस, लेकिन पी उस पैसे को अपने सर्वेंट से रिकवर कर सकता. अब्दुल, जो आपकी क्वेरी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार डिटेल में समझाइए जरा मुझे, एक बार लिख के दीजिएगा, क्लियर लिख के दीजिए. आगे बढ़ते हैं. एजेंसी बाय नेसेसिटी, इमरजेंसी. An agent has authority in an emergency to all the acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. इमरजेंसी के केस में एजेंट अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए वो सब काम कर सकता है वो अपने लिए करता. See the example number 6. The master of the ship, on finding that the cargo is rapidly perishing, is entitled to dispose it off at the best available price so as to bind the consignor as an agent by. कहता शिप एक अभी कुछ समय पहले एक मैटर था जब एक नहर में शिप फंस गया था, काफी दिन में निकला वो. तो उस केस में अगर लगता है कि शिप में कुछ दिक्कत हो रही है और गुड्स उसका पेरिश हो रहा है और खराब हो रहा है, तो वो जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस है उसमें बेच सकता है अगर ये नेसेसिटी है. इतनी बात. नोट एक इंपॉर्टेंट. व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर एंड हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड फॉर हर नेसेसिटीज, द वाइफ हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी एज एन एजेंट टू प्लेज हर हस्बैंड क्रेडिट फॉर बेयर नेसेसिटी. कह रहा है अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है और हस्बैंड उसे जो नेसेसिटीज जरूरत के सामान प्रोवाइड नहीं करता है, तो वाइफ हस्बैंड के नाम पे उधार ले सकती है और उसका पेमेंट हस्बैंड को करना पड़ेगा, बट दैट शुड बी नेसेसिटीज. एग्जांपल नंबर 7. R is the wife of P. She purchased some sarees on credit from Q. Q demanded the amount from P, but P refused. Now Q can recover the amount from P if sarees purchased by R are necessaries for her. अगर साड़ी उसकी जरूरत की चीज है तो उसके लिए वो उसका हस्बैंड लायबिल होगा. क्लियर इतनी बात? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई क्वेरी बच्चों किसी को? बताइए हो तो. This is important for your examination point of view. Conditions for a valid agency by necessity. इस पर आपका एक मतलब समझता हूँ there may be a descriptive question on any of the point, or there may be a direct question like write the condition for a valid agency for necessity. ठीक है, किसी एक पॉइंट पर descriptive question भी आ सकता है, तो प्लीज ध्यान समझिए इसे बच्चों. Condition for a valid agency by necessity. There must be a real and definite necessity for the agent to act on. कि जरूरत होनी चाहिए एजेंट की कि वो एजेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा जरूरत थी उसे डिसीजन लेने की. सेकेंड पॉइंट, it must be impossible for the agent to get instruction from the principal. ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सके जिससे उसे सही डिसीजन लेने का रास्ता मिल सके. The agent must act
ऑनेस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। क्लियर है इतनी बात? द एजेंट मस्ट अडॉप्ट द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल कोर्स अंडर द सर्कमस्टांस, यानी कि एजेंट को वही काम करना चाहिए जो वो अपने लिए करे। And agent must have been possession of the goods belonging to principal and which are subject of the contract, जिस पे उसने नेसेसिटी अप्लाई किया जिस गुड्स पर, वो एजेंट के पोजीशन में ही होने चाहिए। क्लियर? एक क्वेरी आई है मिस्टर प्रणव की, सर बट फॉर गर्ल्स इवन ज्वेलरी नेसेसरी? नो, गर्ल्स के लिए ज्वेलरी नेसेसरी हो सकती है पर लॉ के लिए नहीं है बच्चे मेरे। ठीक है, एक बार ये रीडिंग कर लीजिए बच्चों, पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, agency by operation of law, बहुत सिंपल लैंग्वेज, when law treats one person as an agent of another, जब लॉ के द्वारा ही एक पर्सन को दूसरे का एजेंट माना जाता है, एंड द पार्टनरशिप फर्म इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7, अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द, ये तो क्लियर है सबको, आप लोगों ने पढ़ा भी था फाउंडेशन में। Agency by ratification, please note ratification means confirmation. See what is the provisions, where a person acts for someone without his knowledge or authority and the other person subsequently accepts or ratifies the act, agency by ratification arises and the ratifier is bound by the act as if he had expressly authorized the person to do the act on this behalf. What section 190 says? 196 says that, let's say I am not appointed someone an agent, but that person, the other person has worked for me without my knowledge and without the authority given by me, and afterwards I confirm, okay, done, I accept his act done by the Mr. Swans, कि एक पर्सन कुछ कर रहा है किसी दूसरे के बिहाफ पर, लेकिन उसको नॉलेज के बिना, उसकी अथॉरिटी के बिना, और बाद में जिसके बिहाफ पे वो कर रहा था उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, अपना कंफर्मेशन दे दिया, तो इस केस में क्या माना जाएगा? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। और ये माना जाएगा कि ये वही केस है जहां प्रिंसिपल ने प्रॉपरली उसको ऑथोराइज किया। Piyush is saying, sir, mobile recharge and chocolates necessary? No, एज पर लॉ की अगर हम बात करें तो मेरा आंसर होगा नहीं। ठीक है, जीने के लिए जरूरी चाहिए, मोबाइल रिचार्ज तो आपकी लग्जरी है बेटे। एग्जाम्पल नंबर 8, A insures P's good without his authority. If P ratifies A's act, the policy will be valid as if A had been authorized to insure the goods. सिंपल सा फंडा है। ए ने पी के गुड्स का इंश्योरेंस करा लिया, बाद में पी ने कहा ओके मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो ये माना जाएगा कि ये वो एक्ट है जहां पर पी ने प्रॉपरली ऑथोराइज किया था ए को गुड्स को इंश्योरेंस का। Ratification may be expressed or may be implied by the conduct of the person whose behalf the act are done, यानी कि by the conduct of the principal. Example number 9, A without authority buys goods for P. A ने without authority goods खरीद लिया P के लिए, but afterwards P sell them to T on his own account. P's conduct implies the ratification of the purchase made for him by ए ने कुछ गुड्स खरीदा पी के बिहाफ पर जिसकी अथॉरिटी नहीं थी, बाद में पी ने वो गुड्स बेच दिया, इसका मतलब पी ने एक के एक्ट को क्या कर दिया, उन्होंने रेटिफाई कर दिया, कंफर्म कर दिया। क्लियर यहां तक? 196 197 में कोई डाउट किसी को बच्चों? सपना ने बोला सर फूड शेल्टर क्लॉथ नेसेसरी, ये बात बिल्कुल सही। चलो भाई आगे बढ़े, कोई क्वेरी तो बताओ 196 197 में बच्चों। Essentials of a valid ratification. This is again an important question in this chapter.
कि भाई रेटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ व्हेन द एक्ट वाज डन इन हिज नेम। सोचो कितनी खतरनाक बात है ये, बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन कितनी खतरनाक है। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ व्हेन द एक्ट वाज डन इन हिज नेम। भाई मान लीजिए अगर ए ने एक्ट पी के लिए कोई काम किया, तो पी डेफिनेटली अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो इन एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मर जाएगा तो फिर एक्सेप्ट रेटिफाई कैसे करेगा। तो इस लाइन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कोई बता सकता है, कोई आइडिया दे सकता है मुझे आप लोगों में से, रेलेवेंस इस पॉइंट नंबर ए की। Sunil is saying, sir, once again, example number 9, okay. Mr. Abdul is asking, sir, if A purchases and sells without knowledge of P on the name of P, what will be the consequences? A ने माल खरीदा P के नाम पर और बेच दिया, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? जो प्रॉफिट होगा P क्लेम कर सकता है, लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 ले रहा हूँ बेटे, एक बार लेते हैं। चलो आप लोग जब तक, बाकी लोग इस पर ए पॉइंट की रेलेवेंस सोचो, फिर 9 को दोबारा करा देता हूँ बच्चों। ए विदाउट अथॉरिटी बाइज गुड्स फॉर पी। ठीक है, ए ने गुड्स खरीद लिया पी के बिहाफ पर, और पी ने उसके लिए ऑथराइज नहीं किया था, लेकिन पी ने उस गुड्स को बेच दिया। इसका मतलब पी ने ए के एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, रेटिफाई कर दिया। ठीक है, चतन सेइंग, सर सेम पर्सन नॉट एक्ट एज एजेंट हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। नहीं, means if P is not in existence then A needs to pay, no। देखिए, दिस एक्ट इज, आई थिंक, जो इन मेरी नॉलेज है, जितना मेरा अनुभव है उसका आपसे बता रहा हूं, द ए पॉइंट इज फॉर अनवांटेड। लेट्स से मिस्टर द व्हेन द व्हेन लेट्स से मिस्टर ए, when the mother of Mr. A was pregnant and Mr. A in her womb, and some nurse has helped his mother, and after the birth of Mr. A and after becoming the age of majority, he promised to whatever done by his nurse, by the mother for her nurse. Let's say I'm clearing one more way. एक बात सोचो, क्या हुआ कि एक मिस्टर ए है, जब वो अपनी माँ के पेट में थे तब उनकी मदर ने नर्स, जिस नर्स ने मदर की हेल्प की, उनको कुछ कमिट किया कि मैं आपके लिए ये काम करूंगी, वो करूंगी, और मेरा बेटा इसका पेमेंट करेगा। बाद में जब बेटा बड़ा हो गया, मेजर हो गया, उसके बाद उस बेटे ने कहा ओके, जो मेरी मदर ने कमिटमेंट किया था वो सब मैं एक्सेप्ट कर मेरे बिहाफ पर। दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज at the time when the act was done, Mr. A was not in existence. I am repeating this example. Let's say the mother of Mr. A, when she was pregnant and Mr. A was in her womb, committed some promise, or committed or give some promise to the nurse that my son will give you the support and whatever, we give the money and whatever we. And after birth of A and Mr. A, when becomes the major, ratifies the act, okay, what have my mother promised to you, I will pay. That is not valid, because at the time of the act, Mr. A was not in existence. अब ये क्लियर हुआ ए पॉइंट? किसी को बताओ, डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं बच्चों। क्या क्वेरी है?
Mr. Abhay is saying, sir, when someone sells a property asked by the principal, the agent sells after the death of principal. नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर हम रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं. रेटिफिकेशन में क्या होता है कि एक्ट वाज डन बिफोर विदाउट अथॉरिटी एंड आफ्टर द एक्ट वाज डन that is committed, that is confirmed by the principal. ठीक है. Okay. If Mr. A bonds, Mr. Abdul is asking, sir, if Mr. A bonds, then his mother gave promise. Still, he is not liable as he was not major. Yes, definitely. Second point, the principal must have contractual capacity both at the time of contract and at time of ratification. दोनों टाइम पर वो कैपेबल होना चाहिए एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो मेरे ख्याल से आपका आंसर क्लियर हो गया यहाँ पर अब्दुल जी. सी पॉइंट, रेटिफिकेशन मस्ट बी विद फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स. सारी जानकारी होनी चाहिए. एग्जाम्पल नंबर 10, A has authority from P to buy certain goods at market rate. He buys at a higher rate, but P accepts the purchase. Afterwards, P comes to know that the goods purchased by A for P belongs to A himself. The ratification is not binding on A को ऑथराइज किया P ने कुछ गुड्स खरीदने के लिए, P ने A ने हायर रेट पे खरीदी और P ने एक्सेप्ट कर ली. बाद में P को मालूम पड़ा ये गुड्स तो A का ही था, फैक्ट्स पूरे बताए नहीं इन्हें, तो ratification is not binding. P is not liable for this. And ratification must be in reasonable time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज खरीद लिया 10 साल बाद उसे एक्सेप्ट किया. क्लियर. पॉइंट नंबर A, B, C, D. Anyone else? कोई डाउट? Next point, only lawful acts can be ratified. Unlawful act cannot be ratified. उन्हें रेटिफाई नहीं किया जा सकता. अनलॉफुल एक्ट के लिए वही पर्सन लायबल होगा जिसने वो किया. The whole transaction must be ratified. Part cannot be ratified. For example, Mr. A purchased 100 kg of rice on behalf of P. P accept only 50 kg. Not possible. या तो पूरा करिए या बिल्कुल मत करिए. Ratification must be communicated to the third party. अगर प्रिंसिपल उसे रेटिफाई कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो थर्ड पार्टी को मालूम होना चाहिए, उसके पास कम्युनिकेशन पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाए. रेटिफिकेशन कैन बी ऑफ द एक्ट्स व्हिच द प्रिंसिपल हैड द पावर टू डू. सिंपल फंडा कि भाई प्रिंसिपल उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है जिसकी उसको करने की पावर है. द प्रिंसिपल कैन एक्नॉलेज ओनली दोज एक्ट्स which for which he has power to do, he is authorized to do. Ratification should not put a third party to damage. ये important. Ratification should not put a third party to damage. इसका मतलब ये है कि रेटिफिकेशन से ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्ड पार्टी कुछ लॉस हो जाए. सीधा एग्जांपल नंबर 11, T holds a lease from P terminable on 3 months notice. A, an unauthorized person, gives notice of termination to T. The notice cannot be ratified by P so as to binding on T. एक लीज पे कुछ प्रॉपर्टी P से लेके रखे थे और कहा एग्रीमेंट था कि अगर ये लीज तोड़नी है P को तो 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा. एक मिस्टर ए आए जो अनऑथराइज पर्सन थे, उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी, उन्होंने कहा नोटिस दिया कि भाई कल से घर खाली करो, ये जगह खाली करो. ये बाद में पी ने कहा ओके आई एक्सेप्ट. नो, इससे थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा है, एग्रीमेंट के बियॉन्ड जा रहा है, तो ये एक्ट, ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा. टी उस नोटिस पर रिएक्ट करने के लायबल नहीं. यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? सुपर ओवर का टाइम आ रहा है, उससे पहले कोई डाउट?
विच एग्जाम्पल मिस्टर मोहम्मद असलम साहब कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बताइए प्लीज, नंबर बताइए। कैन ए क्लेम एक्स्ट्रा प्राइजेस? यस ही कैन क्लेम। चलिए स्टार्ट करें, कोई डाउट ना हो तो सुपर ओवर स्टार्ट करें बच्चों। I think I have given you answer of example number 10, Mr. Aslam. चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर ओवर नंबर 1। To whom the agent is responsible? Principal, sub-agent, contractor, none of these. Second question. A person employed to do any act and represent is called agent, principal, owner, servant. Beta, you have to send all the answers in one shot. Under section 185, is consideration necessary to create agency? No, yes, as per contract, according to circumstances. Next. Who can become an agent? Both minor and adult, minor, adult person, dead person. Next. To create an agency, space is not required. Principal, consideration, agent, third party. Which is the most suitable answer? And last one. How the agency is created? By necessity, by ratification, either A or B, none of the above. So I'm just giving you 1 minute to send the answers. Okay. चलिए आंसर डिस्कस करते हैं बच्चों। First is principal. Second is agent. Third is consideration is necessary. Answer is no. Who can become an agent? Both minor and adult.
to create an agency which is not required. Consideration: how the agency is created, either A or B. Okay, who is the first one who has given all the correct answer? The first one is Miss Jyoti Jha. Second one is Mr. Abhay Vasne. Congratulations, beta, both of you. Next one, Miss Khushi. Then Mr. Mohammad Aslam. Mr. Piyush. I think most of you have given the correct answers. So, okay, 1 मिनट के लिए मैं जरा सा 1 मिनट के लिए अपना म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए केवल. प्लीज अलाउ मी. हाँ बच्चों, is minor can act as an agent? Yes, beta, I have discussed with you. चलिए. So the next topic is extent of agent's authority. Now, agent authority, normal circumstances, normal way में उस पर क्या क्या authority है agent के पास, section 188. An agent having authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. यानी कि अगर एक if an agent is authorized to do an act, then in that case, agent to complete that task can do every lawful thing necessary for that purpose. अगर एजेंट को कोई टास्क दिया गया है तो उसको पूरा करने के लिए वो कोई भी लॉफुल काम कर सकता है उस काम को कंप्लीट कर. क्लियर इतनी बात? सी द एग्जांपल नंबर 12. A is employed by B residing in London to recover at Bombay a debt due to B. A may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering the debt and may give a valid discharge for the same. A ने A को A को अथॉरिटी दी गई B के द्वारा, जो B लंदन में रहता है, कि कोई B का कोई लोन है बॉम्बे में जिसे रिकवर करना है.
अब ए बी के बिहाफ पे काम कर रहा है लोन को रिकवर करने के लिए, तो वो लीगल प्रोसेस अप्लाई कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटिंग अ एडवोकेट फॉर दैट पर्पस। तो सारे काम के लिए ऑथोराइज है, जो उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को लॉफुल तरीके से पूरा करने के लिए जरूरी है। An agent having authority to carry on business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of such conducting such business. कह रहा है कि उस एजेंट को ऑथराइज किया गया किसी काम के लिए, तो उस बिजनेस में जो जो काम होते हैं उस काम को करने के लिए एजेंट ऑटोमेटिकली ऑथराइज। See the example number 13, then I'm coming again on the provisions. Example number 13, A constitutes B his agent to carry on the business of a shipbuilder. A constitutes B his agent to carry on the business of a shipbuilder. इस केस में कौन प्रिंसिपल है? ए प्रिंसिपल है और बी कौन है? बी इज द एजेंट। बी में परचेज टिम्बर एंड अदर मटेरियल एंड हायर वर्कमैन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। भाई ए ने बी को अपॉइंट किया एजेंट किस लिए? शिप बनाने के लिए। तो अब बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, टिम्बर, अदर मटेरियल, लेबर चाहिए, वो सारे काम कर सकता है जो नॉर्मल बिजनेस कोर्स में करने की जरूरत है। क्लियर इतनी बात? An agent having an authority to carry on business has authority to do every lawful things necessary for the purpose or usually done in course of conducting such. I think these 2 points are very much clear to you. A query here from your side. Mr. Manoj is asking, sir, how is third party essential for the agency? No बेटा, आप एक्चुअली क्या है, थर्ड पार्टी भी इस एजेंसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बात को हम ये इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें हमने सेलेक्ट करना है बेस्ट ऑप्शन। व्हाट विच इज द बेस्ट ऑप्शन इज कंसीडरेशन। ठीक है। मिस्टर अब्दुल इज आस्किंग व्हाट इफ ए इज लंदन एंड बी इन इंडिया and given authority to A, so what law should be followed? Indian, UK, global or something? अरे बाप रे, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ए लंदन के हैं, बी इंडिया के हैं और बी ने ए को अथॉरिटी दी है, तो कौन सा लॉ लगेगा? आई थिंक द लॉ फॉर बोथ कंट्रीज, कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेक्ट होता है, दो कंट्री के बीच में कॉन्टेक्ट होता है कि वो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, तो उस पर फोकस करेंगे। आई थिंक दिस नीड नॉट टू बी डिस्कस एट दिस प्लेस, क्योंकि हम पे एजेंसी का भी बहुत प्रोविजन पेंडिंग है, उसको कभी और डिस्कस कर लेंगे। एक बात कह रहे हैं, असलम साहब कह रहे हैं, सर प्लीज सी अबव एंड टेल हु टोल्ड द फर्स्ट प्लीज। बेटा असलम साहब, जब आपने पहली बार आंसर दिया था वो आपका आंसर गलत, सेकंड टाइम जब आपने दिया आप 4th नंबर पे थे। ठीक है, मैंने देख लिया बच्चे, टेंशन ना ले। नेक्स्ट, इन इमरजेंसी एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, सेक्शन 189। In emergency, an agent has authority to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. यानी इमरजेंसी में वो सारे काम कर सकता है एजेंट जो जिससे उसके प्रिंसिपल के लॉस को कम किया जा सके, या फिर वो जो अपने लिए करता लॉस से बचाने के लिए, वो सारे काम करने के लिए वो ऑथराइज। An agent for sale may have goods repaired if it be necessary. मान ली एजेंट अपॉइंट किया हमने to sell the goods, but goods demand need repair, so the agent can get the repair. The master of a ship, on finding that the cargo is rapidly perishing, is entitled to dispose it off at the best available price so as to bind the consigner as an agent by necessity. मास्टर है, देखिए शिप का मास्टर का काम क्या है? गुड्स को ले जाना, कार्गो को कैरी करना। लेकिन कार्गो कहीं दिक्कत है, कार्गो खराब, जो कार्गो है, जो सामान है वो खराब हो रहा है, तो उस केस में वो क्या करता है? उससे बेस्ट प्राइस पर बेच देता है। तो दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय नेसेसिटी। क्लियर इतनी बात? वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन 190।
The general rule is that an agent cannot appoint it. This is based on the principle delegatus non potest delegare, which means a delegate cannot further delegate. An agent being a delegate cannot transfer his duty to another. जनरल रूल कहता है भाई जो काम आपको दिया है वो आपको करना, किसी और को नहीं देना करने के लिए, क्योंकि आपको खुद काम डेलीगेट किया हुआ है तो आप किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते, वो काम आपको खुद करना पड़ेगा. But these are the exceptions. Again, this is the important question, maybe important question. Exception for the above rule. यानी कि these are the cases where an agent may appoint an agent in the following circumstances. First, where expressly permitted by the principal. When expressly permitted by the principal, it means principal has permitted the agent to appoint another person. Where the ordinary custom of trade permit delegations, यानी कि जो बिजनेस का तरीका है उसका यही है कि काम एजेंट को दिया जाता है, एजेंट किसी और से काम कराता है. The nature of agency is such that it cannot accomplish without the appointment of sub agent. या काम ही ऐसा है कि जब तक सब एजेंट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कंप्लीट होगा. या फिर where the nature of the job assigned to agent is purely clerical काम है, नोट करना है, टाइप करना है, and does not involve exercise of discretion, कोई अपनी इच्छा नहीं लगानी है, कोई दिमाग नहीं लगाना. In an unforeseen emergency, या कोई इमरजेंसी ऐसी आ गई है कि एजेंट को सब एजेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा. क्लियर यहाँ तक? प्लीज रीड. आई एम टेकिंग वन क्वेरी फ्रॉम योर साइड. मिस के सुप्रधा. Subrata is asking, sir, K is the wife of A. Okay. She purchased a sari on credit from B. B demanded the amount and filed the suit against A. ठीक है. Is this valid agency by necessity? Definitely yes. If sari is the necessity for the wife of A, then it is agency by necessity. मतलब हमने डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को. तो मेरे ख्याल से आलोक is saying, sir, clear, everything is clear till now. Okay बेटा, आगे बढ़ते हैं. सब एजेंट. Now the concept of sub agent, section 190. Meaning, delegation of authority by agent result in an appointment of some sub agent. A person who is appointed by agent is called sub agent. यानी कि मिस्टर ए ने अपना एजेंट अपॉइंट किया और एजेंट ने किसी और को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड सब एजेंट. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सब एजेंट? द सब एजेंट एक्ट्स अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल एजेंट. द रिलेशनशिप बिटवीन सब एजेंट एंड एजेंट इज दैट ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल. There is no privity of contract between principal and sub-agent, and principal cannot file the suit against the sub-agent except in case of fraud or willful wrong. 4 पॉइंट क्या बताए कि जो सब एजेंट होगा वो किसके अंडर में काम करेगा? एजेंट के अंडर में काम करेगा. जब एजेंट और सब एजेंट का रिलेशनशिप है वो कैसा होगा? जैसे एजेंट और प्रिंसिपल का होता है. प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्ट सब एजेंट के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता. केवल और केवल फ्रॉड के केस में ऐसा किया जा सकता है. यहां तक कोई डाउट? मिस्टर मनोज कुमार इज सेइंग, सर, इन एन अनफोर्सीन इमरजेंसी कैन बी द कोविड लॉकडाउन. यस, यू कैन से देयर मे बी एनी इमरजेंसी. This is again important point, consequences of appointing a sub-agent. So there are two concepts, section 192 and section 193. Where a sub-agent is properly appointed, where a sub-agent is improperly appointed.
Properly appointed, you can say with the permission of principal. Principal is liable to third parties for the acts of sub-agent. Agent is responsible to the principal for the acts of sub-agent. The sub-agent is responsible for the acts to the agent and not to the principal, except in case of fraud and willful wrong. And sub-agent cannot sue the principal for remuneration. First point, प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टीज, यानी कि सब एजेंट अगर जो कुछ काम कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल से सूट फाइल कर सकती है। जो सब एजेंट गड़बड़ कर रहा है उसके लिए प्रिंसिपल एजेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, उससे क्लेम कर सकता है। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? एजेंट के लिए है, लेकिन फ्रॉड के केस में प्रिंसिपल उसको सूट फाइल कर सकता है डायरेक्ट, और सब एजेंट प्रिंसिपल को सूट फाइल नहीं कर सकता रेमुनेशन के लिए, वो केवल एजेंट को सूट फाइल। चारों पॉइंट क्लियर है क्या? प्लीज। अगर सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट हुआ, देन प्रिंसिपल इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड टू द थर्ड पार्टी। एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थर्ड पार्टी के लिए और प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल नुकसान हुआ, एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। सब एजेंट की वर्किंग से अगर थर्ड पार्टी नुकसान हुआ तो भी एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एनीथिंग। सब एजेंट का जब रिश्ता ही नहीं है तो वो लायबल भी नहीं होगा किसी काम के, केवल और केवल एजेंट ही लायबल होगा। Miss K. Suprada is saying, sir, but an agency by necessity will arise only in case of emergency. Then how can the person sue for husband for the wife purchase of sari? I have discussed, but I specifically no discuss किया था कि in case of the relationship of husband and wife existing, then husband is responsible to pay the necessities to the wife. ठीक है? Abhishek is saying, sir, clear up till now, okay? Mr. English saying, sir, it means agent is also lazy. Mr. Somesh, what the term of substituted agent we are discussing here? Okay, Sapna is clear. In a point, a principal means original agent. No, principal means principal. Okay. अभी क्या था डिस्कस किया हमने सब एजेंट मींस द एजेंट अपॉइंटेड बाय एजेंट एंड एजेंट इज द प्रिंसिपल फॉर सब एजेंट, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट it is the agent of principal suggested by agent but appointed by principal. सब एजेंट कौन था कि प्रिंसिपल ने काम दिया एजेंट को, एजेंट ने किसी और को अपॉइंट कर दिया, वो सब एजेंट हो गया। तो एजेंट और सब एजेंट के बीच में रिश्ता कैसा है? प्रिंसिपल और एजेंट का। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इसको सजेस्ट एजेंट करता है लेकिन अपॉइंट प्रिंसिपल ही करता है। तो उस केस में सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और एजेंट क्या होगा? एक सेम लेवल पर आ गए। सी मीनिंग सेक्शन 194, substituted agent is a person appointed by an agent to act for the principal in the business of agency with the knowledge and consent of principal. Such person is not sub-agent. See the example number 16 and 17. A directs B to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. B suggests C, an auctioneer, to conduct the sale. C is not sub-agent but is agent for the conduct of the sale. क्या कह रहा है? A ने B से कहा भाई मेरी प्रॉपर्टी कोई ऑक्शन करना है, बेचना है, कोई ऑक्शनर अपॉइंट करना है। B ने कहा भाई साहब C को अपॉइंट कर लो, ये अच्छा सही ऑक्शनर है। तो जो C अपॉइंट हुआ वो
बी का एजेंट नहीं है, वो ए का एजेंट ही होगा, क्योंकि इसे अपॉइंट कौन कर रहा है, ए अपॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 17, A has to recover some money from Z and the company of Delhi. He authorizes B, a merchant in Delhi, to recover the monies. B instructs D, a solicitor, to take legal proceeding against Z and company for the recovery of the money. Now D is not sub-agent, but it is the agent of A. रीडिंग करिए बच्चों एक बार। Abdul is saying, sir, like sub-agent is second layer subsidiary and substitute agent is first layer subsidiary of such company. You can say yes, definitely yes. ये क्लियर है सेक्शन 194? कोई डाउट बच्चों किसी को? ओके। एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, यानी कि जो एजेंट है वो सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूट एजेंट के लिए, तो उसकी क्या ड्यूटी है, व्हाट शुड कंसीडर व्हाइल सजेस्टिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट एजेंट। इन सेलेक्टिंग सच एजेंट for principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. Law is saying कि जब एजेंट सजेस्ट कर रहा है किसी सब्स्टिट्यूट एजेंट को, तो उससे उसके बारे में जानने के लिए वही अपना दिमाग लगाना चाहिए जो एक ऑर्डिनरी दिमाग का आदमी लगा। और अगर उसने इस सब कुछ सही तरीके से किया है, जेन्युइनली किया है, देन उस केस में अगर सब्स्टिट्यूट एजेंट कोई गलती करता है, कोई नेग्लिजेंस करता है, तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। प्लीज रीड वंस अगेन द प्रोविजंस। Pranav is saying substitute agent is not appointed by the principal, he is appointed by the agent. No, I am saying substitute agent is suggested by the agent but appointed by the principal. Example number 18, X appoints Y as his agent to purchase the old cold storage for him. Y appoints Z, a civil engineer, to calculate the worth of that cold storage with the permission of X. Z worked negligently and thereafter it was found that cold storage was not worthy as per report. Held, Y is not liable for negligence of Z. Z will be personally liable for any loss to X due to his negligence. What is the example? He X appointed Y for purchase of cold storage. So Y suggested that Z is civil engineer who can calculate the estimated worth of the cold storage. ठीक है, Z worked negligently and there was loss to the X. So Y is not responsible. Clear? तो ये बात देखिए, अब समझ में आया कि अगर हमारा एजेंट को हमने काम दिया और एजेंट अपने आप काम किसी और से करा रहा है, तो सब एजेंट एजेंट किसी और का नाम सजेस्ट कर रहा है क्योंकि वो एजेंट खुद नहीं कर सकता है उस लेवल का काम, उसके लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए, देन इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट एजेंट। एग्जांपल नंबर 19, A consign goods to B, a merchant for sale. B in due course employs an auctioneer in good credit to sell the goods to A and allows the auctioneer to receive the proceed of the sale. The auctioneer afterwards becomes insolvent without having accounted for the proceed. Y is not responsible to A for the proceed. दोबारा पढ़ते हैं एग्जाम्पल को बच्चों। A consigned good to B a merchant for sale. A ने कुछ गुड्स कंसाइन कर दिया B को सेल के लिए। B in due course employs an auctioneer to in good credit to sell the goods of A. A ने डिस्कस किया और एक बात करके प्रिंसिपल से एक ऑक्शन अपॉइंट कर दिया, इसकी अच्छी क्रेडिट थी।
ऑक्शन ने गुड्स बेच दिया लेकिन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसमें बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर यहां तक? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, अगर डिफरेंस आएगा तो इस क्वेश्चन में ये आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। तो दीज आर द पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, and I think these are very easy. But one thing you must note, that whenever you give the answer of the question which is based on differences, you must have one extra column that is for basis, the heading. ठीक है? So this is time for super over 2, and after that we will have the break of 10 minutes. चलिए स्टार्ट करते हैं। Is a person, space, is a person employed by and acting under the control of original agent in the business of agency. A substituted agent, a sub-agent, a mercantile agent, and universal agent. Who appoints sub-agent? Owner, principal, main agent, servant. असलम साहब कह रहे हैं सर एमसीक्यूज आर इजी। बेटा अगर आपने ढंग से सुना हो तो इजी है, नहीं सुना हो तो ये टफ हो जाएंगे। A substituted agent acts on behalf of principal, sub-agent, agent, none of these. A substituted agent is appointed by to act on behalf of मेघांशी। आप अपनी क्वेरी एक बार दोबारा भेज दीजिए। नेक्स्ट, the power given to agent is reasonable and unreasonable, express and implied, legal and illegal, all above. Which is the correct statement? Where a sub-agent is improperly appointed, principal is not liable to third parties for the acts of the sub-agent. Agent is not responsible to the principal as well as to third parties for the acts of sub-agent, both A and B, none of these. Please send your answers. Meghansh Bharadwaj ji, please send your query once again. चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। आप लोगों के भी आंसर आ गए। आंसर इज सब एजेंट, मेन एजेंट,
principal express and implied, and the correct answer is A. Who are the lucky ones? The first one is Mr. Muhammad Aslam. Congratulations. Second one is Mr. Alok Shivlani. Okay, Meghansh, I have noted your query. I will discuss after the break. Now, Mr. Piyush Chaurasia, congratulations all of you. Mr. Sujal Negi. Okay, congratulations all of you. So I think most of you have given all the correct answers. And one query from Miss K. Supradha. A enters into contract with B for buying B's car as agent of C without C's authority. B repudiates the contract before C comes to know of it. C subsequently ratifies the contract and sues B. Is it valid? No. When the contract is withdrawn by B, then there is no chance of ratification. Okay. So at this place, we are taking the break of 10 minutes. We will rejoin and complete the chapter. Okay, Mr. Manish sir, please.
Okay. एक क्वेरी है मिस्टर अब्दुल जी की। अब्दुल जी कह रहे हैं सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रियल एजेंट। नो, substituted agent is on behalf of principal only. And Mr. what was the name, Meghansh Bharadwaj ji, sir, it is your problem is based on the chapter of bailment and pledge. Sir, it is written in the study material that finder of the lost good cannot sue the true owner in case of true owner denies to pay the remuneration to finder. Sir, please correct the word. Actually मेरे हिसाब से यहाँ पर रेमुनेशन नहीं, कंपनसेशन होना चाहिए। आपकी जो क्वेश्चन है, अगर स्पेसिफिक रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ है जो ओनर है उसने, देन इन दैट केस द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड कैन फाइल द सूट ओनली इन दैट केस। ठीक है, बाकी जो उसने खर्चा किया मेंटेन करने के लिए, उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकता, क्यों डिटेन कर सकता है। आई थिंक योर प्रॉब्लम इज क्लियर। चलिए, नाउ कम टू द ड्यूटीज ऑफ एजेंट। Simple duties, very easy and simple duties of agent is just to carry out the work undertaken according to direction given by the principal. भाई काम उतना ही करना जितने के डायरेक्शन दिया जाए, इसके अलावा you need not to go beyond the directions. The principal instructed his agent to deliver goods only against cash, but the agent delivered the goods on credit. Now the agent was held liable for the price which the purchaser failed to pay. भाई प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को भैया कैश पे माल बेचना है, एजेंट ने उधार बेच दिया, अगर नुकसान हुआ तो एजेंट को भुगतना पड़ेगा, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन the agent should follow the custom of business at the place where such business is conducted. यानी कि अगर प्रिंसिपल ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो एजेंट को जो इस एरिया में जो बिजनेस हो रहा है उसके जो तरीके हैं वही फॉलो करने हैं, कोई एडिशन नहीं जा। यू कैन से दीज आर द रीजनेबल कस्टम, रीजनेबल वर्किंग। एग्जाम्पल नंबर 21C, P appoints A as his agent for his business, in which it is a custom to invest from time to time at interest the money which may be in hand, but A omits to make such investment. A must make goods to pay the interest usually obtained by such investment. Means P is the principal who appointed A as agent for his business, and there was a tradition in that business area that to the agent, the owner, invest the money in hand in the bank and get the interest, but it does not do so, then the loss of interest will be borne by the agent. P ने A को एजेंट अपॉइंट किया, राइट। अब क्या हुआ, P ने A को एजेंट अपॉइंट किया और वहां उस बिजनेस में जहां पर बिजनेस चल रहा है उसमें एक कस्टम है कि भैया जो पैसा आता जाएगा उसे बैंक में जमा करेंगे जिससे ब्याज मिले। ए ने ऐसा नहीं किया। अब प्रिंसिपल को जो लॉस हुआ इंटरेस्ट का वो ए के द्वारा पी को पे किया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टू कैरी आउट द वर्क विद रीजनेबल केयर, सेक्शन 212 सेज कि भैया आप जो काम कर रहे हो, एजेंट साहब जो आप काम कर रहे हो प्रिंसिपल के बिहाफ पर, उससे बड़े तरीके से करना है, केयर के साथ करना है। एग्जाम्पल नंबर 22C, A of India appoints P as his agent to collect money from A's customer and to transfer in A's account. B retains the money for considerable time. A, in consequence of not receiving money, becomes insolvent. Now B is liable for the money and interest from the day on which it ought to have been paid or for any further direct loss, example by variation of rate of exchange.
सेइंग ए ने बी को अपॉइंट किया, एजेंट बनाया और कहा भाई जितने कस्टमर है उनसे पैसा कलेक्ट करके लाओ। बी ने पैसा तो कलेक्ट किया लेकिन ए को नहीं दिया, अपने पास रखा रहा, एक टाइम रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड जाकर, और ए को वो पैसा नहीं मिला तो ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो बी की लायबिलिटी आ गई, जो भी लॉस ए को हुआ वो बी को पे करना पड़ेगा। यानी जो पैसा रख के बैठा वो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो डायरेक्ट लॉस हुआ, कुछ जैसे करेंसी के एक्सचेंज रेट में भी लॉस हुआ तो वो भी बी को पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 23, A of England directed his agent B of Bombay to purchase 100 bags of cement for him and sends to him by certain ship. At that time, the price of each bag was 350. B omished to do so. The ship arrives safely in England. Then the price of cement rises to rupees 400 per bag. Now B is bound to compensate the loss of 5,000. That is 150 rupees per bag for 100 bags. 5,000 to A. Please read the example once again. ए ने बी को अपॉइंट किया, ए इंग्लैंड का पर्सन है, बी बॉम्बे का है, कि भैया आप 100 सीमेंट के बोरे खरीदो और इसी शिप से मुझे भेज दो इंग्लैंड। और जिस समय उसने कहा, ए ने बी को बोला, उस समय प्राइस कितना था, 350। बी ने ऐसा नहीं किया, बी ने ऐसा नहीं किया, शिप इंग्लैंड पहुंच गया। उस समय क्या हुआ, जब माल मिला नहीं, लेकिन उस समय रेट क्या होगा माल के, सीमेंट के बैग के 400 रुपीज, तो लॉस कितना हुआ, 50 रुपीज पर बैग। कौन लायबिल होगा, बी लायबिल होगा ए को लॉस को कॉम्पनसेट करने। क्लियर? मिस्टर पार्थ सारथी सर, एक बार आपकी जो क्वेरी है प्लीज पूरी डिटेल में लिखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके शब्दों से क्या कहना पूछना चाह रहे हैं आप। एक बार प्लीज राइट द प्रॉब्लम इन डिटेल। थर्ड पॉइंट, थर्ड ड्यूटी, टू प्रेजेंट प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल, यानी कि टू गिव ऑल मनी विच ही गेट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। To communicate with the principal in case of difficulty. If there is difficulty in taking decision making, the agent should discuss with principal. He should not take his own decision. कह रहा है कि भैया अगर कोई दिक्कत आती है काम करते समय तो अपना दिमाग मत लगाओ, आप प्रिंसिपल से एक बार डिस्कस करें। Not to deal on his own account without first obtaining the consent of principal, otherwise the principal may repudiate the transaction or claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. The agent should be very much clear in dealing. He should not make his own profit on the dealing on behalf of the principal. If he do so, the principal may cancel the contract और क्लेम द बेनिफिट विच द एजेंट ड्राइव फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा कि भाई प्रिंसिपल को ना, एजेंट को ना प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, प्रिंसिपल भले के लिए काम करना चाहिए, अपना प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए। अगर वो ऐसा किसी जो ट्रांजेक्शन कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, उसमें कोई अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो प्रिंसिपल या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, डिनाई कर सकता है, भैया मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, या फिर जो प्रॉफिट उसने कमाया एजेंट ने वो क्लेम कर सकता है एजेंट। सी द एग्जांपल नंबर 24। A directs B to sell A's estate, A's property. B buys the estate for himself in the name of C without first obtaining the consent of A. A, on discovering that, may repudiate the sale. Clear? A simple example. Mr. Parsati is asking, sir, if the agent not following the instruction of principal and got profit, then principal can claim the profit from the agent. See example number 25. A directs B, his agent, to buy a certain house for him. B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. A may, on discovering that B has bought the house, compel him to sell it to A at the price he gave for it. ए ने बी को कहा कुछ घर खरीदने के लिए, बी ने घर अपने लिए खरीद लिया।
जब ए को मालूम पड़ा तो वो घर बी से खरीद सकता है, राइट? Mr. Abdul is asking, sir, means contract becomes voidable at the option of the principal. Yes, you are absolutely right, beta. Example number 26, Mr. Ahuja of Delhi engaged Mr. Singh as the agent to buy a house in West Extension area. Mr. Singh bought a house for rupees 20 lakhs in the name of a nominee and then purchased it himself for 24 lakhs. And then he sold the same house to Mr. Ahuja for rupees 26 lakhs. आहूजा जी ने कहा सिंह साहब से एक घर खरीद दो मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में। सिंह साहब ने घर खरीदा 20 लाख रुपए का किसी नॉमिनी के नाम से, बाद में उससे 24 लाख का खरीद लिया और आहूजा जी को 26 लाख का बेच दिया। नाउ आहूजा इज एंटाइटल्ड टू रिकवर 6 lakhs from Mr. Singh, being the amount of profit earned by Mr. Singh out of the transaction. Clear? Aslam Saab is asking, sir, what is the difference between example number 24 and 25? In example 24, देखिए, these are the example. 24 में कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, भैया मुझे नहीं लेना, कैंसिल हो गया। और 25 में क्या है, कह रहा तुमने घर खरीदा मेरे नाम से, जबकि मुझे खरीदना था, मेरी बात हो गई थी, तो मैं इससे रिकवर कर। To protect and preserve the interest of the principal in case of his death or insolvency. यानी कि if the principal is dead or become insolvent, then it is the duty of the agent to protect his interest, his money, right? To pay some receipt for the principal, he may deduct therefrom all monies due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him means agent, in conducting such business, and also such remuneration as may be payable to him as agent. कह रहा है कि एजेंट को जो भी ब्याह प्रिंसिपल ब्याह पे मिला वो प्रिंसिपल को वापस करना है। हालांकि एजेंट इसमें से वो सारे खर्चे जो उसने पे किए हैं या बेयर किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डिडक्ट कर सकता है। अच्छा, कोई रेमुनेशन डिसाइड हुआ है, द रेमुनेशन डिसाइडेड बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट, देन agent can deduct this amount of remuneration from the payment to be given to principal. Not to use information obtained in the course of agency against the principal. For simple, if a agent found any information during the relationship as an agent and principal, he should not use it against the principal. And not to delegate the authority without the consent of principal. आपको डेलीगेट प्रिंसिपल से पूछे करना है, तब एजेंट बनाना, से बिना पूछे नहीं बनाना चाहिए। One query is example number 26. Jyoti is asking example 26. Example 26 क्या था बेटे? आहूजा जी ने मकान खरीदना था, सिंह साहब ने मकान खरीदा, पहले 20 लाख का मकान था, पहले 24 लाख का अपने नॉमिनी के नाम में खरीद लिया और 20 लाख का खरीद लिया नॉमिनी के नाम में, नॉमिनी से 24 लाख में खरीद लिया और 26 लाख का बेच दिया आहूजा जी को। तो आहूजा वो मकान 20 लाख का कितने का बेचा आहूजा सिंह साहब ने? 26 लाख में। तो 6 लाख का प्रॉफिट कमाया सिंह साहब ने, वो आहूजा जी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। राइट्स ऑफ एजेंट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट में कोई डाउट किसी को बच्चों? To retain out of any sums received in agency all monies due to himself in respect of his remuneration and advances made or expenses properly incurred by him in the conducting such business. I think we have just discussed this point. Right of lien on principal goods, paper, other property until remuneration due to him is paid. Remuneration, if decided, then second number point will be applicable. Right of indemnification against the consequences of all lawful acts done by him in the exercise of authority conferred upon him. It means if an agent is doing his duty as per the instruction of principal and found some loss, he should be indemnified by the principal. Example 27, B, an agent of A entered into a contract on behalf of A with C on to supply a certain goods. A did not supply on time. C filed a suit against B.
B has to pay legal expenses to defend the case. Here B can recover those legal charges from A. क्या कह रहा है? B एजेंट है A का, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया A के बिहाफ पर C के साथ, कुछ गुड्स सप्लाई करना है B को, C के पास पहुंचाना है. जो गुड्स B किससे लेगा? A से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बिहाफ पे कर रहा है? A के बिहाफ पर. A ने वो गुड्स सप्लाई नहीं किया, इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ B और C के बीच में वो गड़बड़ हो गया. C ने B के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया और B को कॉम्पनसेशन देना पड़ा, कुछ खर्चे करने पड़े उस केस को सॉल्व करने के लिए. वो जो खर्चे B रिकवर कर सकता है A. क्लियर? राइट में 1 2 3 राइट में कोई डाउट किसी को बच्चों? To receive agreed remuneration as per the agreement. If there is no agreement, then claim a reasonable. देखिए, लॉ एजेंसी लॉ कहता है रेमुनरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर डिसाइड हो चुका है कि भैया एजेंसी में मैं अपने एजेंट को कोई कंसिलेशन या रेमुनरेशन नहीं दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. अगर स्पेसिफिक डिसाइड हो गया है और डिसाइड हुआ है रेमुनरेशन का, तो क्लेम करेगा एजेंट. नहीं डिसाइड हुआ है तो एक रीजनेबल रेमुनरेशन क्लेम कर सकता. Okay, what Mr. Abhay is saying? Abhay is saying, sir, if A has agent B and A says to B to do anything he sees and then appoints C as substitute, will A be liable for the acts of C? देखिए, अगर आपकी बात को मैं डिटेल में लूं तो पूरी बात तो ये है कि A ने अपॉइंट किया B को एज एजेंट, राइट, और B किसी काम के लिए, और B को कहा भाई तुम जो चाहो कर सकते हो, तो मैं अलाउ कर रहा हूं सब चीज के लिए, कोई लॉयर अपॉइंट करना है, व्हाटएवर भी, और B ने अपॉइंट कर दिया C को एज ए सब्स्टिट्यूट एजेंट, तो A लायबल होगा? डेफिनेटली यस. Abdul is asking, sir, if agent has not complied with the instruction of principal and the principal has not paid his remuneration, can agent use his right of lien? No. एजेंट के राइट जब ही होंगे जब ड्यूटी पूरी की होगी उसने. Mr. Pranav is saying, sir, can we say reasonable claim is that which prevail in the similar business or in that area? You can say yes. चलिए आगे बढ़ते हैं. Example number 28. A was employed an agent to sell a property on the term that he would paid commission on the completion of sale. He produced a person ready and willing to buy, but the owner refused to sell. Hence, the agent was not entitled to commission as the sale was not completed. Simple. However, agent not entitled to remuneration for business misconducted. अगर वो कुछ misconduct करता है तो वो compensation claim नहीं कर सकता, remuneration claim नहीं कर सकता. See example number 29. A employs B to recover 1,000 rupees from C. Through B's misconduct, the money is could not recovered. Now B is not entitled to any remuneration for his service and must make good the loss. A ने B को पॉइंट किया कि भैया C से 1,000 रुपए लेके आने, लेकिन B ने कुछ गड़बड़ करी तो वो पैसा आएगा ही नहीं, तो B को ना तो रेमुनेशन मिलेगा और जो लॉस हुआ A को वो B को चुकाना पड़ेगा. राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ. एजेंट ने अगर सही काम किया है उसके बाद लॉस हुआ तो वो क्लेम कर सकता है किससे? प्रिंसिपल. सी. A at the request of P sells good in the possession of P, but P had no right to dispose of. A does not know this and hand over the proceed of the sale to P. Afterwards, P, the true owner of the goods, sue A and recover the value of the goods and cost. P is liable to P is liable to indemnify A for what he has been compelled to pay to C and for A's expenses. So what is the example? Example 30 says कि P appointed Mr. A as his agent to sell the goods of T, and A was
unknown with this fact, and he sold the goods in good faith and gave hand over the proceed to Mr. P. And whenever the T knows the fact and file the suit against the Mr. A and recover the compensation from Mr. A, and A has to bear the expenses in the court. Now A can recover all the losses, all the expenses from Mr. P. But important thing, however, the right to indemnify is not available those acts which are unlawful or criminal. अगर एजेंट ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है या अनलॉफुल एक्ट किया है, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा. क्लियर? राइट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर इंजुरीज कॉज्ड बाय हिम बाय नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल. यानी कि इस प्रिंसिपल ने कोई नेग्लेक्ट किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में और इससे एजेंट को नुकसान हुआ, इन दैट केस एजेंट कैन गेट द कॉम्पनसेशन. Example 31, A employs B as bricklayer in building a house and put up the scaffolding himself. The scaffolding is unskillfully put up and B is in consequences hurt. A must make the compensation. A ने B को लगाया कि भैया आप ये ईंटों की दीवार बना दीजिए. उसके लिए ना साथ में जो खड़े होते हैं ना, बम्बू वगैरह खड़े होते हैं, जो कहते हैं ना एक मचान बनाई जाती है लगाने के लिए, वो प्रॉपर नहीं लगाई, जिससे क्या हुआ, बी गिर गया, चोट लग गई. बी कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन फ्रॉम ए. क्लियर है यहां तक बच्चों? सिंपल था बिल्कुल. नाउ प्रिंसिपल लायबिलिटी टू थर्ड पर्सन. अगर राइट्स क्लियर हैं तो फिर मैं इस पॉइंट को आगे लेके आऊं बच्चों. ओके, कोई क्वेरी नहीं है. प्रिंसिपल लायबिलिटी टू थर्ड पर्सन. प्रिंसिपल कहां पर लायबल होगा, यानी कि थर्ड पर्सन कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन फ्रॉम प्रिंसिपल. इन व्हाट केस? एक मैं क्वेरी देख रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को क्वेरी तो नहीं है? Okay. Liability for the acts of agent. Section 226. The principal is liable for all the acts of an agent which are lawful and within the scope of agent authority. यानी कि agent ने, if agent has worked within the authority, principal is liable for the acts of the agent. It's simple thing. A being B's agent is authorized by B to receive money on his behalf. He receives from C a sum of money due to B. C is discharge of his obligation to pay the sum in the question to B. क्या मतलब हुआ इसका कि A जो B का एजेंट है, A को ऑथराइज किया B ने कि C से पैसा रिकवर कर लो. B ने C से पैसा रिकवर कर लिया, C की लायबिलिटी खत्म. Liability when agent exceed authority, when agent goes beyond his authority, where the agent does more than he is authorized to do and the act done beyond his authority can be separated from what is within the authority, then the principal is liable only for such part for what agent is authorized. कह रहा है कि एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके कोई काम कर रहा है और वो काम सेपरेट हो सकता है, यानी कि विद इन अथॉरिटी और विदाउट अथॉरिटी सेपरेट हो सकता है, इन दैट केस प्रिंसिपल केवल उस पार्ट के लायबल होगा जिसके लिए उसने अथॉरिटी दी. सी द एग्जांपल नंबर 33. A authorizes B to procure an insurance on a ship. A authorizes B to procure an insurance on a ship. B procures a policy on the ship and another on cargo. Now A is bound to pay the premium on the policy on the ship.
is not bound to pay the premium on the policy of cargo. ए ने बी को ऑथराइज किया कि आप मेरे शिप का इंश्योरेंस ले लीजिए, तो बी ने क्या किया, दो पॉलिसी ली, एक शिप की और एक कार्गो की। ऑथराइज किसके लिए था, वो शिप के लिए। देन जो बी है किसके लायबिल होगा, ए किसके लायबिल होगा बच्चे, केवल और केवल शिप के लिए। जो पॉलिसी कार्गो के लिए है उसके लिए बी ही लायबिल होगा, ए से क्लेम नहीं कर। क्या क्वेरी है? चलिए, liability when agent exceed authority and that cannot be separated. See, where the agent does more than he is authorized to do and the act done beyond his authority cannot be separated from what is within the authority, then principal can repudiate the transaction. He is not bound to recognize the transaction. See, A authorizes B to buy 500 sheep for him. B buys 500 sheep and 200 lambs for a lump sum of rupees 6,000. Cannot be bifurcated what is the price of sheep and what is the price of lambs. Then A may repudiate the whole transaction. A ने B को ऑथराइज किया कि भैया 500 भेड़ें खरीद लो, भेड़ों से लैम्प्स भी खरीद लिए उसने, और लमसम पेमेंट कर दिया 6,000 का। बाइफर्केट नहीं हो सकता कि कितना पेमेंट शीप्स के लिए, कितना लैम्प्स के लिए। तो ए उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, पूरा मना कर सकता है, एक्सेप्ट कर। मिस्टर अभय वाशने इज आस्किंग, if A orders agent to make a house and B makes it and accidentally gets the laptop buried in the land below building, will A be liable? देखिए, अगर accidentally हुआ है तो liable नहीं होगा। Mr. Piyush is asking, sir, what if the third party is not aware about the authority of agent and acted in bona fide? Piyush is saying, sir, if the third party is working in bona fide, then in good faith, then principal is liable and principal can claim from the agent. Aslam साहब कह रहे हैं, sir, head point number 2 and 3 are same, just slight difference in point number 2 and 3. In point number 2, the work can be separated. In point number 3, work cannot be separated. Pranav is saying, in case we can say if principal ratify, he is liable. Yes. Alok is asking, sir, what is the meaning of repudiate? Repudiate means cancel, not accepting. Right? Fourth point, consequences of notice given to agent. Any notice given to agent in the course of business transacted by him for the principal shall have the same legal consequences as if it has been given to the principal. अगर कोई नोटिस एजेंट को दिया जा रहा है तो माना जा रहा है कि वो किसको मिल गया, प्रिंसिपल को मिल गया। Manoj is saying, sir, I am not well, I am not able to concentrate on in the class. Sorry, sir. No, don't worry, beta. Please take rest and then you can go through the recorded lecture. ठीक है बेटा, आराम कीजिए आप। Liability of principal inducing belief that agent unauthorized act were authorized. देखिए क्या कह रहा है। When an agent has without authority done act or incurred obligation to third person on behalf of principal, the principal is bound by such act or obligation if he has by words or conduct induced such third party to believe that such act and obligation were within the scope of agent authority, like agency by holding out or agency by estoppel. Please read once again. When an agent has without authority done acts or incurred obligation to third person on behalf of his principal, the principal is bound by such act or obligation if he has by his words or conduct induced such person, third person, to believe that such act and obligation were within the scope of agent authority.
कह रहा है कि एजेंट विदाउट अथॉरिटी काम करता है और प्रिंसिपल ने थर्ड पर्सन को यकीन दिला दिया था कि जो एजेंट है वो उसको अथॉरिटी है काम करने की, उस केस में प्रिंसिपल लायबल होगा। सी द एग्जांपल नंबर 35। A tells P within the leaving of P that A is P's agent. P does not object the statement of A. Later on, P supplies certain goods to A, who pretends to be acting as an agent of P. He is liable to pay the price of P. We have discussed this example in previous slides. I think ये example clear हो गया बच्चों आप लोगों को। बहुत सिंपल सी बात थी कि अगर प्रिंसिपल ने यकीन दिला दिया थर्ड पर्सन को कि भाई A is agent, then principal is liable for the acts of the agent. Next point, effect on agreement of misrepresentation or fraud. Effect on agreement of misrepresentation or fraud by agent. If agent commits any misrepresentation or fraud in the course of their business for the principal, shall have the same effect as if committed by the principal, and principal will be liable, but he can claim from the agent. A being B's agent for the sale of goods induces C to buy them by misrepresentation, which he has not authorized by B to make. The contract is voidable as between B and C at the option of C only. पढ़िए एक बार इसको बच्चों। C के ऑप्शन पे voidable है, B के ऑप्शन पे नहीं। If C is, do not avoid the contract, B will be liable. Next, personal liability of agent. These are the cases where agent is personally liable. पिछले टॉपिक में कोई डाउट किसी को बच्चों 6 पॉइंट डिस्कस किए हमने आपसे, प्रिंसिपल लायबिलिटी, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पर्सन, कोई डाउट हो तो बताइए, देन वी विल डिस्कस पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट। ओके, फॉरेन प्रिंसिपल, if agent works for a person who is a foreigner, who is resident of abroad, then agent will be personally liable. Undisclosed principal, when agent does not disclose the name of principal, then agent will be personally liable. Principal cannot sue being incompetent. If principal is minor or unsound mind, then agent will be personally liable. When agent acts beyond authority that is not ratified by the principal. एजेंट ने बियॉन्ड अथॉरिटी काम किया और प्रिंसिपल ने उसे रेटिफाई एक्नॉलेज नहीं किया, देन इन दैट केस एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। असलम साहब लिख लो, वैसे तो ये स्लाइड्स मैंने दी हुई है आप लोगों को। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, when there is contract expressly provide that agent will be personally liable, in that case agent will be personally liable. Agent signed the document contract in his own name without making it clear that he is agent. एजेंट ने साइन किया डॉक्यूमेंट और ये नहीं लिखा कि वो एज एजेंट साइन कर रहा है, तो पर्सनली लायबल हो जाएगा। ज्योति इज आस्किंग सर, it means minor can be principal. If minor is principal, then agent will be personally liable. If agent is minor, then he is not liable to principal. Principal is liable for third person. Clear? Principal principal not in existence, then agent will be personally liable. यानी कि where agent acts for the principal not in existence, then agent will be personally liable. Mistake or fraud, where agent receive or pays money by mistake or fraud, then agent will be personally liable. Where authority is coupled with interest,
See example auctioneer factor where commission is based on the sale transaction. Then in that case, principal is personal liability. See the examples, understand the example. Suppose I have made an agent to collect the money from my customer and I'm making the commission on 5% on collection amount. In that case, agent will be personally liable. Jyoti is asking, sir, if agent and principal both are minor, contract is void. Pretended agent. When agent pretends, but he is not an actual agent and the principal does not ratify the act, the pretended agent will be personally liable. यानी कि एजेंट ने बताया मैं एजेंट हूं, कुछ काम किया कि वो एजेंट नहीं था और प्रिंसिपल ने उसको रेटिफाई भी नहीं किया तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। क्लियर यहां तक बच्चों? बहुत सिंपल था ये। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। अब जो थर्ड पार्टी है उसके क्या राइट्स है अगेंस्ट प्रिंसिपल एंड एजेंट? पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट में कोई डाउट किसी को बच्चों? टॉपिक में डाउट? पूछिए। सर प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 9। ओके देखिए समझिए क्वेश्चन को कि अगर सपोज आई हैव अपॉइंटेड मिस्टर ए as my agent to collect the fees from my clients and I am offering 5% commission on the collection amount. If agent do anything which is I think I am not authorizing, he will be personally liable. मैंने भैया एक को अपॉइंट किया, भाई तुम मेरे एजेंट हो और तुम्हें मेरे क्लाइंट से पैसा कलेक्ट करना है, मेरी फीस कलेक्ट करनी है और जो भी कलेक्ट करके लाओगे उससे 5% मैं आपको कमीशन दूंगा। तो अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसे लॉस होता है या कुछ ऐसे बियॉन्ड जाता है तो वो पर्सनली लायबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ थर्ड पार्टी। When agent does not disclose that he is acting as an agent, the third party has a right to against him as a principal. मतलब अगर एजेंट ने ये नहीं बताया कि वो एज ए एजेंट काम कर रहा है तो थर्ड पार्टी उसको प्रिंसिपल मानेगी और उस पर प्रिंसिपल की तरह ही राइट क्लेम करेगी। If the principal discloses himself before the contract is completed, the other contracting party may refuse to fulfill the contract if he can show that if he had the knowledge about the principal in contract, he would not have entered into the contract. See, second point saying, if principal just before the contract disclose himself, प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट से कंप्लीट होने से जस्ट पहले बताया कि वो प्रिंसिपल है और जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो एजेंट है, तो द अदर पार्टी थर्ड पार्टी अगर ये प्रूव कर दे कि अगर उससे पहले से मालूम होता कि ये पर्सन आदमी ये प्रिंसिपल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग? इफ मिस्टर ए enters into a contract with Mr. T, if Mr. A enters in a contract with Mr. T on behalf of P, but P does not disclose that he is principal and A is agent, and also A does not disclose the fact. Before the contract is going to complete, P informs T that he is the principal and A, the other A who is entering the contract, is just the agent on my behalf. And T says that if we have the facts of the case that you are the principal, we never enter into contract, then T has a right to cancel the contract. क्लियर इतनी बात? P A ने कॉन्टेक्ट किया P के बिहाफ पर T से
और पी को ए ने बताया नहीं कि पी प्रिंसिपल है और ए तो केवल एजेंट है। और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा था तब पी को मालूम पड़ा कि पी इज द प्रिंसिपल। पी ने कहा भाई साहब अगर मुझे मालूम होता ना पहले से तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, लिख लो मेरी बात। इस केस में टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। When agent does not disclose that he is acting an agent and the principal requires the performance of the contract, then principal can obtain such performance subject to the right and obligation subsisting between the agent and the other party to the contract. Before understanding section 232, please read example number 37. Aman sells 1,000 rupees worth of rice to Tarun. Aman also liable to pay 500 to Tarun. Aman is acting as an agent for Pratap in the transaction, but Tarun has no knowledge and nor reasonable ground of suspicion that Aman is acting as an agent of Pratap. Now Tarun has right to adjust 500 from 1,000. Pratap cannot compel Tarun to take the rice without setting off Aman's debt. Means Aman is an agent of Pratap. Aman sells 100 rupees worth rice to Tarun, right? Aman is liable to Tarun for rupees 500, and Aman is entering into contract thinking that he will adjust 500 against the Aman. Afterwards, Tarun knew that Pratap is the principal and Aman is just the agent. Now, Pratap has no right to enter into contract without setting off the claim of 500. क्या कहा मैंने सब चीज में? अमन ने 100 रुपए का चावल तरुण को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि अमन 100 रुपए लेगा, सॉरी 1,000 रुपए का, अमन 1,000 रुपए लेगा तरुण से। अमन को 500 रुपए देने भी तरुण को। अमन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था 1,000 रुपए का चावल बेचने का, वो प्रताप के बिहाफ पे कर रहा था, प्रताप प्रिंसिपल है। ये बात उनको पता ही नहीं थी, ना उसे आइडिया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अमन एज ए एजेंट काम कर रहा है। इसका मतलब तरुण क्या कर रहा था, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था अमन से, अगर अमन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता तो तरुण जो 500 रुपए लेने थे अमन से, वो एडजस्ट करता है 1,000 रुपए में। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा ये तो प्रताप के बिहाफ पे कर रहा है, बाद में मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, अब जो अमन तरुण के राइट है वो रहेंगे, यानी कि प्रताप को वो अमाउंट सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 232। When agent does not disclose that he is acting as an agent and the principal requires the performance of contract, then principal can obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the third party. कह रहा है अगर एजेंट ने नहीं बताया कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, एज ए एजेंट काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल को जो रिश्ता, जो राइट्स और ड्यूटीज हैं एजेंट और अदर पार्टी या थर्ड पार्टी के बीच में, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। नाउ प्लीज रीड वंस अगेन ऑन सेक्शन 232 एंड द एग्जाम। पढ़ लिया बच्चों? Point number 4. In cases where the agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. 233 is very important. कह रहा है अगर जो केसेस है जिसमें एजेंट पर्सनली लायबल है,
तो थर्ड पार्टी एजेंट पे भी सूट फाइल कर सकता है और प्रिंसिपल भी कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 38, P enters into a contract with A to sell him 100 bales of cotton and afterwards discovered that A was acting as agent for P. Now T may sue either A or P or both for the price of the. Pranav is asking, sir, in this case, the principal can take 500 from agent. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. Where when a person who has made a contract with an agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable, or induces the principal to act upon the belief that agent only will be liable, then he cannot afterwards hold liable the agent or the principal respectively. Please read. थोड़ा सा टेक्निकल है. 234 पढ़िए, ध्यान समझिए. When a person who has made a contract with agent, ठीक है, third person means third person, induces the agent to act upon the belief that principal only will be liable. एजेंट के साथ कॉन्टेक्ट किया और बिलीफ ये बातों में बता दिया कि इस काम के लिए जो मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूं केवल प्रिंसिपल लायबिल होगा, तो बाद में वो एजेंट को लायबिल नहीं कर सकता. और induces the principal to act upon the belief that agent only will be liable. प्रिंसिपल के साथ कॉन्टेक्ट किया कि भैया तुम्हारा एजेंट ही लायबिल हो, तुम लायबिल नहीं होगे. He cannot afterwards, he means third person, cannot afterwards hold liable the agent or principal respectively. अगर एजेंट से कहा कि तू लायबिल होगा तो प्रिंसिपल लायबिल नहीं होगा, और प्रिंसिपल से कहा कि एजेंट लायबिल होगा तो प्रिंसिपल लायबिल नहीं. आलोक इज सेइंग, सर दोनों को पागल बना रखा है. मुझे लग रहा है बच्चे थक गए. ठीक है, थोड़ा सा और है बेटा, थोड़ी देर का 5-7 मिनट और, 5-10 मिनट और. नाउ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. एजेंसी कैसे टर्मिनेट हो सकती है? देयर आर टू वेज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन ऑफ मींस कंपल्सन. बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बाय एग्रीमेंट, बाय रिवोकेशन, बाय रिनाउंसिएशन ऑफ द एजेंसी बाय एजेंट. सी, by agreement, mutual agreement between principal and agent. By revocation, revocation मतलब agency may be terminated by principal. अंडरलाइन कीजिए इसमें बच्चों. By principal, revoking authority of agent before the authority has been exercised. But if authority has been exercised, the agency cannot be revoked. Note, the principal cannot revoke the agency. This is important, please mark. The principal cannot revoke the agency where authority of agent coupled with the interest. Coupled with the interest. See the example number 39. P gives authority to A to sell P's land and to pay himself out of the proceeds the debt due to him from P. P cannot revoke his authority nor can be terminated by his insanity or death. Means P ने एक अथॉरिटी दी कि भैया आप मेरा लैंड बेच दो और जो मुझे पैसा देना है, आपको एजेंट को पैसा देना है, वो आप लैंड बेच के रिकवर कर. अब ये इंटरेस्ट लगा हुआ है एजेंट का, तो ये एजेंसी प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता. इवन अगर डेथ हो जाए प्रिंसिपल की, या डेथ हो जाए या इंसैनिटी हो जाए, उस केस में भी ये रिवोक नहीं की जा सकती. कोई डाउट इस स्लाइड में बच्चों? आगे बढ़ते. बाय रिवोकेशन अथॉरिटी ऑफ एजेंट इज पार्टली एक्साइज. देखिए ये नोट है, नोट का सेकंड पॉइंट है, यानी कि द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द एजेंसी वेयर द अथॉरिटी ऑफ एजेंट इज पार्टली एक्साइज. एजेंट ने थोड़ा काम कर दिया है, थोड़ा बाकी है, तो वो रिवोक नहीं. P authorizes A to buy 100 tons of rice for P and to pay for it out of the P's money remaining in A's hand.
A buys 100 tons of rice for P in his own name so as to make himself personally liable for the price. Now P cannot revoke the A's authority so far as the payment for the printing typing error है बच्चों. This is not cotton. This is please correct कर लीजिए. This is not the rice. टाइपिंग एरर है बच्चों. प्रणव कह रहे हैं सर डेथ हो गई तो कैसे सेल करें. डेथ प्रिंसिपल की बात हो रही है बेटा. डेथ ऑफ प्रिंसिपल. लीगल हेयर विल बी लायबल. ठीक है. बाय रिनाउंसिएशन ऑफ एजेंसी बाय एजेंट. एजेंट ने खुद ही एजेंसी छोड़ दी अपनी. एजेंट हैज रिलीज द एजेंसी. An agency may be terminated by agent by renouncing the business of agency. Renouncing may be express or implied. When agency for a fixed period, agent must compensate the principal for premature renouncing of the agent. अगर एजेंट ने बीच में यदि छोड़ दी, नुकसान हुआ प्रिंसिपल को, तो एजेंट को कंपनसेट करना पड़ेगा. A reasonable notice should be given for renunciation. एक रीजनेबल नोटिस देना है एजेंट को कि भाई इस टाइम कुछ एक रीजनेबल, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि भाई आपको इस टाइम के बाद हम एजेंसी में काम नहीं करें. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कंपलसरी. ये केसेस हैं जहां पर एजेंसी रिवोक की जा सकती है. अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स. द क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द वे व्हाट आर द केसेस इन विच एजेंसी इज कंपल्सरीली रिवोक्ड. बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस हो गया, काम खत्म. एक्सपायरी ऑफ टाइम. इफ एजेंसी इज फॉर टाइम देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम एजेंसी विल बी रिवोक्ड. डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट. इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल. Destruction of subject matter. Very simple points. By the principal become an alien enemy. Remember alien enemy. By dissolution of the company where it is an agent or principal. Right. Prachi is saying, sir, means agent's own benefit. Yes. Mohammed Aslam is saying renunciation must be with the consent of principal. No. If agent, please see the slide. प्रीमेचर कर सकता है, दे सकता है, रिनाउंस कर सकता है कि मुझे एजेंसी नहीं करनी है, लेकिन अगर लॉस होता है प्रिंसिपल को तो वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. कंसेंट की जरूरत नहीं. ठीक है. सो दिस वाज द कॉन्टेंट ऑफ एजेंसी. एनी डाउट सो दैट वी कैन स्टार्ट द सुपर ओवर 3. आई थिंक 3 minutes आर ओवर योर शेड्यूल. कोई बात नहीं, 5-7 मिनट और. बताएं बच्चों को क्वेरी हो तो, नहीं तो फिर स्टार्ट करें सुपर ओवर 3. क्वेरी है मिस्टर अभय. If A is liable for 1,000 to B and gives the rise of 1,000 to sale, then A dies. Then will agency exist? एक second. A liable है 1,000 to B and give rise of 100 to sell. Okay. Agency will exist and B will sell and get the price of 1,000. Okay. So you have, all of you have given the permission for start the super over. Pranav is asking, sir, please take remaining chapter also. No, beta. As per the institute guidelines, I have to take all these only these 3 chapters. But you, all of you, are requested to give the feedback of your class of contract. So let's start the super over 3. On whose insolvency the agency is terminated? Sub agent, agent, principal, del trader. अभी अभी आया ये, लास्ट स्लाइड थी क्वेश्चन की. Second point, under which circumstances agent become personally responsible?
all is under. B, fraudulent transaction, fraud, ultra wires. Remember ultra wires? Muhammad Aslam said, sir, today last class. Yeah, definitely. I will also miss all of you, all of my future chartered accountants. When agent is liable to pay compensation to principal for misconduct, negligence, both A and B. It is the duty of agent to protect and preserve the interest on behalf of the principal's representative in case of death of the principal, insolvency of principal, both A and B. Next, agent should not to deal on his own account without first obtaining the consent of principal. Otherwise, the principal may repudiate a transaction, claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction, either A or B, both A and B. This is the tricky question. If remuneration is not fixed, the agent has no right to receive any remuneration, right to claim reasonable remuneration, right to claim remuneration as decided by court, none of these. असलम साहब आज आप लेट हो गए, अब इस बार तो आप लास्ट सुपर ओवर में लेट हो गए, आप किसी और ने आंसर भेज दिए, someone else has sent all the answers, correct answers just before me. चलिए भेजिए आप लोग 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट है, आंसर भेजिए, देन वी विल डिस्कस. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. On whose insolvency the agency is terminated, that is principal. Under which circumstances
agent become personally liable, all as under when agent is liable to pay compensation to principal, both A and B. It is the duty of agent to protect and preserve the interest on behalf of the principal representative in case of both A and B. सर ये ट्रिकी क्वेश्चन था. Agent should not to deal on his own account without first obtaining the consent of the principal. Otherwise, the principal may repudiate the transaction, claim the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. Either A or B, both. Both is not correct answer because either repudiate or either accept. If he accept the transaction, then he can claim the profit. So the right answer is C. दोनों में से एक ही ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, या तो रेपुडिएट करेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे क्लेम कर सकते हैं, और जब क्लेम कर रहे हैं तभी प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं तो आपको ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. लास्ट इज रीजनेबल रेम्यूनरेशन. So the first one is Mr. Ingley. Congratulations. Second one is Mr. Alok Shivlani. Congratulations, बच्चे. Abhishek saying, sir, you are the best faculty up till now, and thanks for being here to bless us with your knowledge. Thank you so much, bache. Thank you so much. And next one is असलम साहब कह रहे हैं एजेंसी का 10th क्वेश्चन. अभी देखते हैं बच्चे. और कौन है भाई? मिस सपना. कॉन्ग्रेचुलेशन. चलिए 10th क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई साहब कह रहे हैं. तो 10th क्वेश्चन तो बहुत पीछे होगा. कौन सी स्लाइड पे? एक सेकंड रुकिए बच्चे. एग्जाम्पल नंबर 10 था. A has an authority from P to buy certain goods at market rate. He buys at higher rate, but B accept the purchase. After what P comes to know that the goods purchased by A for P belongs to A himself. Ratification is not binding. ये कह रहा है कि मैंने यही बताया कि अगर प्रिंसिपल को मालूम पड़ता है कि एजेंट ने कुछ अपना प्रॉफिट बना रखा है तो दो चीजें हैं उसके पास. या तो वो प्रॉफिट क्लेम करेगा या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा. ठीक है. चलिए और क्या क्वेरी रह गई? थैंक यू सुनील जी. थैंक यू सो मच. एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. वेरी सून you will be converted from student of CA to CA. स्टूडेंट हट जाएगा, CA रह जाएगा. मेरी विशेष है, मेरी blessings all of you, and God bless you. All the very best. Thank you so much everyone for your patience hearing, and definitely you have enjoyed the law, but please revise all the 3 units. That will be very helpful in your exam. Thank you so much. Thank you everyone. Manish ji, class